मैं बिल्कुल बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली अभी गौरव माना जी ने जो इंट्रोडक्शन कराया रीच का, तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी हमेशा से एक शिकायत रहती थी कि जो इंडियन अब्रॉड हैं, जो बाहर रहते हैं, वो इतना एक्टिवली अपने कंट्री की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज के डिफेंस के लिए नहीं खड़ा होते जितना के पाकिस्तानी होते हैं या दूसरे कम्युनिटी के होते हैं। तो मुझे हमेशा से एक शिकायत थी और मैं ढूंढता रहता था। ऐसे में मेरा राब्ता हुआ रीच वालों से, और मैं आज प्राउडली कह सकता हूं कि आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ रीच के लोगों के बारे में मैं बता दूं कि इन लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं है इंडिविजुअल लाइफ में, लेकिन ये अपने देश के लिए अनबायस्ड स्टैंड लेते हैं। और मैंने रीच के एक एक मेंबर से मेरे अब जाती ताल्लुकात हैं, और मैंने देखा है कि ये खाली ये नहीं है कि ट्वीट करते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा दी, जहां जरूरत पड़ती है एक्टिवली सामने आते हैं। जैसे कि जब अमेज़न का प्रोटेस्ट करना पड़ा तो ये आए। अभी पाकिस्तान हाई कमीशन पे रीच भरपूर तरीके से शिरकत हुआ। इसके अलावा आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में आपने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, उसमें रीच ने एक भरपूर एक्टिविटी की है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं और थैंक करता हूं रीच को टू मेकिंग मी पार्ट ऑफ रीच। और ये है कि आई होप कि मोर एंड मोर पीपल विल जॉइन अस एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि हर भारतीय की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, कि वो अपने कंट्री के डिफेंस के लिए एक योद्धा बन के खड़ा हो। और रीच के काफी सारे चैप्टर्स हैं, आप जहां भी रहते हैं काइंडली ज्वाइन रीच। Yeah, thank you so much, Arif ji. Sometimes we do host Gaurav Major Arya also, and you can hear him. There are a lot of topics which Reach brings out across all the audience, like geopolitics, or it may be Hindutva, or bringing Indians together. Gaurav Manaji, you wanted to say something? I saw your mic. नहीं गायत्री जी, बस I'll only add is के thank you Arif bhai first of all, and thanks Colonel Rohit also for the thought, because I think the thoughts are very important in terms of shaping the whole narrative, isn't it? And I think Arif bhai, आपको तो मालूम ही है, जिस दिन से आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ख्यालात इन सब मामलों में बहुत क्लियर हैं कि हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर वो इंडिया के खिलाफ है। तो बस सिंपल सी बात है, और उतना ही वो हम कर रहे हैं। और उसके पीछे चाहे हमारे को वेबिनार्स करने पड़े, प्रोटेस्ट करने पड़े, या सोशल मीडिया पे हैंड्स ऑन किसी के साथ डुअल भी हो सके, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन हम इंडिया को हारने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। दैट इज़ व्हाट आवर एम इज़। And I thank all my core team actually, from everybody who's joined today as well, that they have been the pillar and the rock bed of this initiative from last two years, because अकेला ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं आरिफ भाई, अगर हम सारे इकट्ठे हैं तो ये काम हो सकता है। That's all I'll say. Thank you गायत्री जी। Thank you so much. आते हैं डॉक्टर गौरव प्रधान जी के पास। Everybody knows he's so popular among us, among all the nationalists, and I would also request him to speak like how does he feels when he gets invitation from Reach UK to speak about country's issues, and we will go on from there. Yeah. गायत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द पोडियम। मेरे को जब पहली बार रीच से इनविटेशन आया था और मैंने लिखा था अपने टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं ट्विटर पे नहीं हूँ जैसा कि सब जानते हैं, मैं टेलीग्राम पे लिखता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने कहा कि रीच ये रीच वो, डोंट ज्वाइन देम, यू नो दे विल स्पॉइल। तो मेरा एक ही जवाब था, मेरा एक जवाब ये था, अगर पाकिस्तान भी भारत की साथ खड़ा हो जाए और सनातन को अपना ले तो गौरव प्रधान पाकिस्तान के फेवर में भी बोल सकता है। मेरा स्टैंड लाइफ का बिल्कुल क्लियर है, मेरा देश और मेरा सनातन, तीसरी चीज कुछ नहीं है। मुझे किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई जॉब नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, मंत्री नहीं बनना है, इलेक्शन नहीं लड़ना है। मेरा एक ध्येय है कि मेरा भारत महान हो और मेरा सनातन ग्लो करे।
कर्नल देव को मैंने सुना, literally he put it things very well. I just want to add couple of things to what Colonel Dev has spoken, if he permits me to do that. प्रॉब्लम क्या है, जो सनातन सोसाइटी है, जो भारतीय सोसाइटी है, और मैं आज के भारत या 75 साल पुराने भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1000 साल पुराने भारत की। प्रॉब्लम हमारे साथ सबसे बड़ी ये थी कि हमारी सोसाइटी बाय नेचर एक पैसिव सोसाइटी है। तो हमारी पैसिव सोसाइटी में कहता हूं तो उसका अर्थ होता है कि चलता है, हमारा क्या जाएगा, हमें क्या लेना देना, हमारा तो घर चल रहा है, दुकान चल रही है, बिजनेस चल रहा है। यही एटीट्यूड था 1000 साल पहले जो हमें गुलाम बना गया। क्योंकि आप अगर आज देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी टीवी चैनल हो, कुछ भी हो दुनिया में, हम सब पिछले 70 साल से जो एक बात करते हैं वो ये करते हैं कि भारत की आजादी कैसे मिली। बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, किसी स्कूल में पढ़ता हो, भारत की आजादी की बात उसे बताई जाती है, सिखाई जाती है। हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए, सेना में जो लोग शहीद हुए, उन सब की बात करी जाती है। बस यहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो बताया गया हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तब एक बात सामने निकल के आती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पढ़ाया जा रहा है आजादी कैसे मिली। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पढ़ाया जा रहा कि पहली बार में आजादी गई कैसे थी। क्योंकि अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारी आजादी गई क्यों थी, जिसकी वजह से हमें लड़ना पड़ा, सैक्रिफाइस देनी पड़ी, लाखों लोगों की सैक्रिफाइस देनी पड़ी, तो हमें आजादी मिली, तो ये आजादी गई क्यों थी, ये जब हम बात करेंगे तो हमारी समझ में आएगा एक शब्द कि हमारे डीएनए में पैसिव नेचर था। चलता है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम चलता है। ये चीज 2014 में बदली। और 2000, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए समझने की कोशिश थोड़ी ज्यादा कर सकता हूं क्योंकि मेरा अनुभव रहा है। 29-30 साल मैंने देश के बाहर काम करा है, विभिन्न कंट्रियों में करा है, 55 देशों में करा है, सीनियर रोल्स पे रहा हूँ, CIO, CTO इत्यादि इत्यादि। मैंने हमेशा एम्बेसी में हमें इनवाइट मिलता था आने के लिए, आते थे, दारू पीते थे, खाना खाते थे, गप्पे मारते थे, चले जाते थे। लेकिन अब हम जब एम्बेसी में जाते हैं तो डिस्कशन दूसरे लेवल का होता है। डिस्कशन अब ये नहीं होता कि हम 2 मिनट चाहते हैं एम्बेसडर से, बल्कि एम्बेसडर अब 2 मिनट चाहता है हमसे। ये फर्क आया है। तो वो जो डायस्पोरा को प्रधानमंत्री ने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से एड्रेस करना जो शुरुआत करी, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। उसने देश को जोड़ना शुरू करा। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ, उस भारत की बात कर रहा हूँ जो भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। उस देश को जोड़ना शुरू करा, उस डायस्पोरा। और इसमें सब है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सारे रिलीजन, सारी कास्ट सब है। ये देश जुड़ना शुरू हुआ भारत। क्योंकि पहले मैं अपनी बात करूं तो हम, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से हूं, तो हम एक चीप लेबर से ज्यादा कुछ नहीं थे। ट्रांजिट एयरपोर्ट पे जो हमारे साथ व्यवहार होता था, चाहे वो एम्स्टर्डम हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे वो आपका दुबई हो, चाहे कहीं और हो, हमें पता है वी वर जस्ट चीप लेबर्स। आज जब हम जाते हैं तो परसेप्शन टोटली चेंज है। तो ये जो यूनिफिकेशन हुई, और उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा, पहले कारण तो आता है जब लीडरशिप वीक होती है, जब लीडरशिप इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और अगर आप डिप्लोमेसी समझते हैं, डिप्लोमेसी जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये बात कि जो डायस्पोरा है वो हमेशा एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक सॉफ्ट पावर होती है। भारतीय क्योंकि एजुकेटेड हैं, विदेशों में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा रोल है, तो हम एक पावरफुल डायस्पोरा हैं। तो जब कर्नल देव ने बात करी कि यूएन में जो लॉबी है, जो बेसिकली लॉबीज होती हैं, उसका फर्क पड़ता है डायस्पोरा से।
जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था वो हमेशा कनेक्टेड रहा, जो भारतीय डायस्पोरा था वो कनेक्टेड नहीं रहा कभी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी सेंस ऑफ प्राइड नहीं थी कि वो कनेक्ट हो सके, ना इंडिविजुअल लेवल पे, ना देश के लेवल पे, ना अचीवमेंट के लेवल पे। लेकिन जब देश बढ़ना शुरू हुआ, जब देश में अचीवमेंट आने शुरू हुए, जब देश में पीछे एक लीडरशिप स्ट्रॉन्ग खड़ी होनी शुरू हुई और वो दिखनी शुरू हुई, तो क्वाइट नेचुरल वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू भारत स्टार्टेड। और वो एक टर्निंग फेज था जो हम शायद 1000 साल पहले खो चुके थे, और उसकी शुरुआत एक बार फिर हो रही है कि आज हम कनेक्ट हो रहे हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं केवल हिंदू की बात नहीं करता, मैं भारत में रहने वाला मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पिछड़ी जाति हो, आगे की जाति हो, पीछे की जाति हो, बीच की जाति हो, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। जो भारत में पैदा हुआ है, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ। तो मैं रीच को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आज उनकी 2nd एनिवर्सरी है। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, और मुझे नहीं पता आपकी फाउंडेशन है, किस माध्यम से आप काम करते हैं, लेकिन जैसे कोरोना खत्म होता है, मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि क्योंकि मैं जरा पुराने किस्म का टेक्निकल बंदा हूँ, ज्यादा ऑनलाइन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जब तक किसी का हाथ पकड़ के शेक हैंड ना करो, जब तक गले ना मिलो, तब तक बात नहीं, मजा नहीं आता मुझे कन्वर्सेशन में। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे कोरोना खत्म हो, आप लोगों की सामर्थ्य हो, रीच यूके अपने लंदन में एक शो ऑर्गेनाइज करे, एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज करे, 1-2 दिन का फुल लेंथ, विभिन्न स्पीकर वहां से बुलाए जाएं, चाहे कहीं से भी हो, और उसको हम टेलीवाइज करें अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और जो भी माध्यम है हमारे उन पे करें। ऐसे हम करके ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा यही पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा लंबा हो गया, शायद बोलने की बीमारी है मुझे, लेकिन क्या करूं, बोल देता हूं जो मन में आता है। गायत्री जी। थैंक यू सो मच। गौरव जी, आप गौरव महाना जी, आप बोलना चाहेंगे कि हाउ कैन वी प्रोग्रेस? Yeah, no, I think Dr. Pradhan, first of all, thank you. Thanks for kind words. I think आपकी बात बिल्कुल सही है. हम लोग actually जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा it is upon us, then we will definitely are thinking of organizing something big in UK. Obviously हम लोग अब जैसे मैंने भैया गौरव मान, एक बात याद रखना भैया, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो अगर मुझे बुलाओ तो मेरी फुली स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी, ठीक है ना? जैसे आप गरीब है वैसे हम भी गरीब है, पर लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे, फिक्र ना करिए। जी जी जी, नहीं, आई थिंक गायत्री जी, let's take it forward from here in terms of questions or anything we are getting from viewers. Yeah, before starting the question answer session, a lot of people are messaging me and asking how to join Reach. So don't worry, after this session I will request Gaurav Mahana ji to put his link, Telegram links, WhatsApp, or we can the ways to join. So please do watch out his timeline. Question answer session से शुरू करते हैं. With regards to Afghanistan, it's a burning issue which is going on, and do you want to put that into discussion, Gaurav Mahana ji? Because people are messaging me. Hello, Gaurav Mahana ji, can you hear me? Let's put that, Gayatri, no problem, and you should start with Colonel Dave, a soldier. He can put his perspective, then others can. Okay, sure. So, Rohit sir, what do you think about India's strategy today? If we think, because Pakistan has been involved with the Taliban counterparts and is taking over Panjshir. So, what do you think at this moment India is doing? See, I'll just give a few pointers, because what India is doing, India will do in any which case. The first thing is that at the strategic level, we may term the US pullout as a blunder. Some may, have a little more passion and, say it whatever way they want to say. It can also be construed as a mixed bag, and it can be seen that whatever
opinion shaping in this part is happening. Unlike when our country is faced with challenges, whether it is COVID challenge or a diplomatic challenge or anything with Balakot strike, you name it, any level of operational, strategic or tactical also, we always have a debate in our country, and there are naysayers and there are people who question, and all that happens, right? Today, US is not only plagued with so to say, a punch in its face for this pullout. It is also facing one of the bigger times in COVID currently in the recent past. And look at the way their media is. You may have a Fox News channel there who's trying to question otherwise, maybe a couple of more. But the narrative being built by the US, so the strategic thought is getting dissipated through their media agencies, through their diplomats, to make sure that the decision they have taken for a domestic coin to increase by saying, yes, I have pulled back my young men and women from war zone, that should be the driving narrative. So you see from that point of view, I think they're succeeding in a large way there. The other way to look at it is that, okay, US has done a deal, gone out. They are still saying that they will control a little bit of future of Afghanistan. If that future is contingent to the freeze on the $9 billion or something like that, I'm afraid in today's geopolitics, it has got no meaning. Because in any which case, that crunch for cash can be easily supported by a country like China, who may step in for, creating one more economic slave zone in the region through Afghanistan, like they have done with Pakistan. So when you see India's perspective there, we had at the tactical level one requirement initially, that our people should come back safe and sound when this chaos started happening recently. That we have managed. Now it was in Taliban's interest, and believe you me, India's investment in Afghanistan has been more in terms of infrastructure, medical care and allied features. It has never been with boots on ground to fight. We were asked for that option maybe 7-8 years ago or 10 years ago, when even President Barack Obama was more keen of an Indian role there, but we never put the boots on ground. And we always retained the feeling that, okay, we will only go there if the UN mandate comes around. It never came, right? So it never came, we never went. And that way, I think we have been strategically a little better placed today, that we have never been a contributor to the mayhem, bloodshed and fight or infight in Afghanistan, otherwise at the visible level. Right? There's a differentiation at the visible level, and there is something which happens behind scenes, behind closed doors through third-party interventions. That is a different thing. But we have directly never been part of the fight at all. When it comes to today, so we are at a pedestal in which the Taliban wants us to carry on with the infrastructure development. The questions are, how soon will India step in? Because if we don't step in towards even its infrastructure in a real time frame, China will step in. So the messengers, whether it's Pakistan, whether it's the money flowing for the airport or otherwise through Turkey, the money is only one country, the money is China, right? So Turkey and Pakistan are no more getting funded directly by any other country today. And if you see from that perspective, a choice would have to be made. In the future, an Afghan government will come into existence. It will come into being sooner or later. How it will be curated, how many of Al-Qaeda, how many of the Afghani network, how many of the general public, how many of the businessmen. And I'm not too sure if Taliban today, in the first tier of the faces to be shown to the world, is going to put many thinkers and many financial biscuits at the front. So obviously there will be second tier, third tier and fourth tier kind of people, bureaucrats and ministers who will support the cause from beneath and stabilize Afghanistan, whereas they are bound to give the initial booty of the top leaders to their entire terror network, which has been able to, sort of in a way, people can say they are creating this propaganda as well, to ouster the US and the NATO forces from Afghanistan. And in that, when the space comes up in Afghanistan, the choices with the world are going to be accept the Afghanistan government or do not accept on the premise that it has been built on the edifice of terror groups and you can't go ahead. So India will have to make that choice sooner or later in the future. The government may have shades of women joining in, shades of some more liberals, so to say, joining in, some, financial world people joining in, whatever. So it will take a construct.
And that construct, I'm afraid, slowly and gradually, the West, which was involved with this particular country, will portray it to be a success, right? So they think they have a lane over the Taliban. They think the deal will be good in the governance structure, but it's only for time to tell. My fear is it will never be to that liking of even the West. But let's see how the machinery builds up and accepts first. As we speak today, even the US is not sure about what is being constructed there. So they have come on record, the diplomats have spoken. So I don't think so they are in sync and as a house saying the common thing to say acceptance or no acceptance. So India, as we always say, will have to wait and watch. And I don't think so any behind the scene movement to support either the Northern Alliance or the resistance movement or blah, blah, blah is going to help the Indian cause in any which way. So we are looking at Afghanistan as old relations between the two countries. We never have said no to anything positive which is prosperity driven for Afghanistan. We have never, let them off from our handle in terms of education, financial, infrastructure, and other domains. So we will continue to retain that cord, not necessarily, rejuvenate that cord and start for the money to flow soon enough now. But I think in the future, when we accept a government there, our aim initially would be to ensure that our interest and assets which we have deployed there are taken care of, and also our threat remains. This is a very potent trend which is at the operational and tactical level, not at a strategic level. So you see, we put a tap on Pakistan through our government's proactive, but certainly from next year onwards, you will find that. I also see through this route, because all these networks, you call it TTP, Taliban, Haqqani, Khorasan, Al-Qaeda, all are stitched together, right? From the Quetta Shura, Peshawar Shura, and today they are naming it as Taliban Shura. They're all connected. So you may see a revival of the 90s when even the foreign mercenaries will be pumped into Kashmir in the coming years. The degree of preparation of our intelligence agencies, the decisiveness of the government, and also the military prowess and the fencing coming up and the ability to have second and third tier of deployment in the Kashmir Valley will ensure that they can come in whatever numbers, they will be taken care of and be sent on Route 72 very easily by us. So that is our current prowess. And we are not a country of 2013 like Gaurav ji said. Even the army's hands are quite free and loose right now along the LC. And there has been no day since 2014 July when late Shri God bless his soul, JPG visited one of the posts near where I was posted that time and passed some instructions. Our troops have been a little more proactive, if I may say, all along the LC as well. So Afghanistan, the other part would be what kind of financial prudence will India take ahead? We have already invested a few billions there. Most of the projects are complete, some are were under completion when we had a pullout there. When will the diplomatic channels be opened again? And how do we think how much should we invest there while keeping not only our interest in a bilateral fashion there, but will it lead to Taliban-led government or whatever the Afghan government we may call it, not siding with Pakistan on certain critical aspects of bolstering terrorism in Kashmir? So that has to be in the back of our mind in anything to do with the Afghan government, which is going to come in the near future. And it will also entail now that the West, which is now thinking of a sort of a partial re-entry into Afghanistan through the humanitarian access route and then build up whatever they want to do, and they presuppose that they have a handle on Afghanistan, which I don't think so they have the handle to that degree. They can dictate what happens in Afghanistan. We will have to be very careful how we build up. The second aspect which many people ask about Afghanistan, and let me kill it here itself, is the plethora of arms and ammunition which is kept there. So apart from the small arms and ammunition in bulk coming to Kashmir, the balance, there is a problem. The limited problem is that the balance of equipment also flows into Pakistan. The limited problem is that, yes, China will do reverse engineering of that equipment, and the American technology for this generation of equipment will be compromised. So obviously America will have to up the game, do more R&D and create more structure, A+1 type of hardware for the future. The caution to India is that of late, because of our strategic partnership, and believe you me, everything with US dwells on national interest of US as well. So one of the primary components there
is the defense arms and ammunition trade, basically imports by India from the US. Barack Obama was very unhappy when we went with Rafale and not with a Boeing-led kind of an aircraft that time. So they are looking at a lot of money coming to their country with India buying defense gadgets and arms and ammunition and software or whatever they may be on the table. It's a caution for India today, based on this, largesse which they have given to Taliban, a terrorist group, in terms of arms, ammunition, and planes, whatever. That how can India trust the technology? For example, if a C-130 or C-17 Globemaster is today in Indian arsenal, so and if it has been compromised to any degree, even through maintenance logs, even through the aircraft, in which they have punched some holes or whatever they get their hands on, it's a problem for us because these Globemasters were acting also in the Galwan crisis. And if software is compromised somehow, it's a problem for our country. You remember the Sukhoi aircraft which led to a crash suddenly about 3, 4, or 5 years back in the Northeast? We didn't hear about it much in the media thereafter, but it was apparently that its software had been compromised somehow. Why? Because the same Su series was also from the Russians at some point of time, taken by the Chinese. The Chinese took a Soviet-built kind of a ship which was part like an aircraft carrier, and they built through reverse engineering their own fleet, although much inferior, but they did build it. So these are certain dilemmas which our country faces today at all levels. And the last part is, how do you have the leverage on a world platform, right? I spoke somewhere, and let me coin it a little more as a layman for you. US for the last 2 decades has been talking about effect-based operations everywhere, right? Effect-based. And my ears are actually gone numb hearing this for the longest time. And it involves everything from hybrid to guerrilla to information warfare, cyber warfare, everything else, gets part of effect-based. Finally, today, it is not effect-based in Afghanistan. It's a compromise-based strategy. So firstly, you have compromised. You have compromised even the intent of the NATO forces. And you're sitting on the most holy, structure of the UNSC, where there is a Russia and a China who at best can abstain. And to make them abstain, you need to be strong. And now you have given the bargaining chip and the handle to China to step up and say, see, there was a superpower, can't do much. And China has been struggling and competing with you, and they have enhanced their visibility and viability in the economic realm. And now in the next step, they're looking at the military realm. And they have a clear-cut white paper which all think tanks, and that is what I was discussing the other day with somebody. US has invested the maximum in 2 spheres which nobody in the world has invested. One is the R&D of anything, from defense to whatever sphere you want to name. And second is the think tank, right? They have so many forums and quoras there which talk about geopolitics, diplomacy, and they go deep dive into military capabilities, economic capabilities. And every year the Congress has given a report of every country, right? They're so good. And the country being so good, if that country did not even read through the last 2 years of the UN report on Afghanistan, in which they were the contributors to the report. Because since they were leading the fight in Afghanistan, they were the maximum, source-based information going into that report. And if you read those 2 reports, if I'm not wrong, if I remember, the 2019 report is, S20. 20418. Please read it if you have time. And 2021 report of the same era in May this year is 486. And if you read that, and if you see how they pulled out, it is actually that you were sitting on the high horse. You curated the entire vision for this pullout. You knew the challenges of this pullout, and still you couldn't do it the way you wanted. So imagine how the geopolitics shapes hereafter. People are already talking to us. I was in a think tank group with the US and somebody from Canada and Australia the other day. They're talking about how Quad should do more. Now, there's a mandate of the UN there, and you're talking about a Quad. Quad is a quasi kind of an organization today which is not looking at owning of and conjoining of military capabilities today. It will in the future. And I keep saying is Quad is just a start, so it may be a Quad plus tomorrow. So maybe 4 countries plus 2 more can do something somewhere.
Maybe 3 countries from Quad and 5 from somewhere else can do something else, militarily, economically, or diplomatically. So that is the way it will shape up. But the most renounced structure is the UN. And when I was talking there, I said, you can still get your one leg back into Afghanistan through the humanitarian access and see where it goes. But today you don't have the liberty. So as everybody sees today as Afghanistan, and when you compare, and a lot of people in naysayers, I heard some rubbish on our TV channels when they said, the government has been let down, we have lost everything in Afghanistan, we have invested so much. No, my dear. Right from the deeper infrastructure projects there, the healthcare projects there, and including the auto rickshaws which you saw running as late as, the TV screens have shown in the last 1 week, they're all intact. So how do you say that our infrastructure has been, gone under a bus? It is not. It is not. So you imagine that since, and Gaurav ji, talked about our Sanatan part. One of the part of Sanatan part is that we also believe in goodness of everybody, the well-being of everybody. And our entire bargaining chip today in Afghanistan is that we have been humane and we have strived for prosperity and peace in Afghanistan. So no Afghani, no Taliban, no anybody there can say that the Indians had interference in Afghanistan. They can talk about US, they can talk about NATO forces, they can talk about each other's, contrary groups there, and they can also talk about in the same token about Pakistan. And that is where the fault line lies today, which our, Chanakya Niti will obviously play up, and how it plays up, it's for some other forum probably, in 2 ways. One is the Durand line, and one is to keep the narrative alive that Taliban was struck by the NATO forces with support of Pakistan all through. So Pakistan has played the point both sides. So if we keep these two narratives alive between whatever warring factions, fighting against even each other or grouping together, we can still create a narrative which is conducive for our country to belittle and bring down the coin which Pakistan thinks it has earned. And that is the way I see our even, diplomatic overtures going in the future. The linkages between Pakistan and these terrorist groups operating today in Afghanistan with a surge of the Caucasus Russians, the people from China, even there, these terrorist groups. It is very important for India to keep maintaining the dossiers. There are many countries who are echoing the sentiments, including think tanks in US. And it could be a better day and a time to push the pedal to keep Pakistan at least in the grey list and enhance the scope of it coming in the blacklist in the future. I understand blacklist is not easy because there the number games count in terms of voting, but we can certainly make a difference. I mean, 2-3 years back, many ambassadors on a TV show told technical hold by China, it will put like it put last year and it will not go. And there was only one person on that panel, I remember, that was myself. I said, give it 2 or 3 months, this time the technical hold will be taken off by China. Instead of 3 months, China did in 2 months. That is the kind of aggressive diplomacy we follow today. That's the kind of, economic might we have today. We may not discern it today as Indians individually, but you imagine the markets, the dynamic market shifts in the future, the next 3-4 decades is India. The youth, as very, very conveniently spoken by a lot of our politicians, even the head of the executive, is that we have the coin to grow as the youth, the most useful country in terms of prominence and economy as well. So that is where I would say we have a lot of role play, but we should not be, those zealots I see on television who want answers from the government. There's a gentleman who is 6 feet plus coming from some part of India, wears a cap. He was telling on the TV show when I was there about 15 days back, I said so many months ago that we should engage with Taliban. Now somebody engaged with Taliban in Doha. The same chap says on another channel that, there's a weak government on its knees, infrastructure, they have put money there, they have had, the biggest disaster going into Afghanistan. What kind of a narrative is being said? It's kiddish. A class 9-10 student today understands geopolitics better than most of our politicians. And that's the sad part. Because the route to go to Lok Sabha, Rajya Sabha is so extraneous.
that even criminals can reach there with the money power. But it's the onus is on the literate people who are on forums like such as this today to be able to have a proper opinion shaping and a narrative building and involving people. In fact, I spoke on, I think, on a Reach platform last year when you met me for first time on a webinar. I said, even the youth in the colleges, the learned people who go for cultural exchanges and inter-school exchanges abroad from schools, that is the level where we need to, indulge, no matter who you are, your stature in society is today, how much of experience you have, what is your age, doesn't matter. But we owe it to our next generation and next to next generation to make them more aware. So this 5, 7, 10 years of aggressive awareness which has happened in our country, we have been taken off from slumber to be able to think and have an opinion, is something which needs to be carried forward. And that is where I find people like us who are on this particular space today, no matter where you are, no matter you are the citizen, no matter you are the youth of this country, no matter you're the diaspora, you need to carry the opinion shaping in national interest as the bottom line for your existence. Even if you are a top-notch corporate honcho, you can make the difference to this country. I can cite a few examples a little later about this. I'll give you only one example from my personal experience in the corporate sector a little later. But you can make that difference. You can carry the message for everything, including Atmanirbhar Bharat today, to the world as an individual. That's your power. And if you can understand the power your country is, and you can be the messenger for their power, you can do much more for your country. And that is where the self-confidence must come up and emanate and outshine, so the world takes notice. 15, 20 years back, who considered us anything even geopolitically? For the longest time, the narrative was sabotaged by our naysayers and the cabal inside to say, oh, Pakistan is a powerful enemy, a neighbor, we must talk, nuclear, and they can do all that. America is by its side. Bum come. 7 or 10 years ago, and I see a lot of military people joining now, in a forum, we used to have our big screens in a core in a command headquarters. The first slide, and bear me out, the first slide always, even in the military, used to be geopolitical scan out versus that effect. And they used to have a map of world, and they used to put those boxes with a yellow color background and a black color lettering to say which country is important for geopolitics. And they used to name Pakistan also. And it was that time I said, you are making a mistake. You are making a mistake because Pakistan will suck up your economy for the next 3 decades, whereas your enemies are beyond Pakistan. The enemies economically would be China. If you don't compete now, you will never militarily be able to face up to them. And here we are, and I say with all of conviction, 3 years behind with China already. So that is where we are. And any buffoon, and sorry, pardon that word I used, any buffoon who thinks that India has been a sucker in Afghanistan, I think they are off their handle and their intellect mindset, and they need to rethink. They need to rethink long time. I think I've spoken enough on Afghanistan. Let's get some more views and questions if there are. Thank you, guys. Yeah, so certainly India needs to broaden its diplomatic engagement with like whatever government comes in Afghanistan, because it has to look to its future. So do you think that Indian decision makers were fully informed about it earlier, that this situation is coming out? Yes. There has been no case in our diplomatic channels to be able to discern what's happening where. It was a cozy club. When you say nuclear bogey and nuclear intent of Pakistan and China is giving them $2 missiles to fire at us, what did you do? You created such a hullabaloo about that the military thinkers who are supposed to act as a war machine, instead of talking how to fight and gain territory and punish Pakistan, they started drawing all kind of escalatory mechanisms, all kind of red line, blue line, green line, whatever lines they could think of. And the out-of-the-box thinkers got left out because the contemporary thinkers thought, oh, we can't do this. And after 3 decades when Balochistan happened, tell me what was more prudent than a Balochistan than crossing any line of Pakistan which they made fictitiously with the eyesight.
So what do? You clipped the wings of your military prowess and made the hands go behind your backs, and you put, like a policeman, you chained them. And not to be quoted, even if I'm quoted, I don't care. So there was a scene in Baramulla sector, 2014 July, which I mentioned briefly earlier. Let me illustrate that thing, and let me see if I can be a little diplomatic about it. So there is a Raksha Mantri standing there, having tea with troops. And there's a Khalsa Paltan there, Sikh Paltan. And he asked somebody, what is that? So they see a bunker little in the near vicinity on the next hilltop. And in whatever language the Subedar Major used, he says, Pakistani bunker and all that. And he tried to gauge his morale. He said, why can't you capture it? Words to the effect. And he said, you give the order, I will take it by evening. So he said, what other are you waiting for? Right? So somebody said, sir, actually this, that, peacekeeping measures, confidence building measures, blah, blah, blah. So the army is talking about CBM and not realizing what on ground it could do actually. So he said, it's your business to do whatever you want to do it here. If it gets escalated to our level of polity and decision makers and cabinet, will see it. So he passed some instructions. Standing on the same feature, right, from the army commander. You can now Google who was the army commander, who was the corps commander. It's all there on the net. And the same army commander, after leaving the uniform, the same army commander who was about to punish people for that, mobile checkpost case where the firing happened when a Maruti Jeep 800 went through 3 checkposts to be shot at the 4th or the 3rd one. The same army commander who was called out by the captains and lieutenants to come and speak and address them and assuage their, morale and josh, is telling on the national television that how hands-free we were. How hands-free we were to conduct strikes, and we have done everything like Uri strike earlier as well. So that is where the narrative changes. And I am telling you, don't hold it personally against me. You had the series of beheadings. Remember, beheadings used to be a sort of a Paris, ramp walk kind of a event happening against our country at some point of time. So Pakis would come and behead him. So obviously, you put yourself in a shoe of a company commander or a battalion commander or a brigade commander at least. If somebody comes and cuts 2 heads, what will you do? You will say we are following confidence building measures? No. No, sir, no, ma'am. You will get the head from the other side also. So no quotation, no time perspective, but a case happened like this. And the diktat was to have a Koto inquiry to get into the roots and punish people who did it. God bless his soul, who was a GOC that time, he put his foot down and didn't do it. So he must have got sacked for it. But the colonel saab below and the brigadier saab didn't face the wrath. So we have evolved. We have evolved because apart from whatever we say that the military is getting consumed by politics these days, even the serving people are getting consumed. Yes, to some degree it may happen or not happen. But certainly there is an aggressiveness in approach today on the LC, and I am telling you, it is 99% courtesy the military itself and 1% which actually was overbearing is the political intent. So if you see all this and if you can derive, what I'm trying to say, you will appreciate that today as citizens of our country, whether we are veterans, whether we are doctors, whether we are serving in the forces, whether we are an IT guy, we are carrying that pride of being an Indian in more numbers today than we were earlier. Isn't that a change? Just off the record, that case of that gentleman who died from the Bollywood, Sushant, right? Yes, sir. Tell me which case of harm, deaths has carried on for more than a year. And how is it coming? It is coming because of the awareness of the youth, the citizens and the diaspora who are keeping that issue alive. So what is this? This is enhanced awareness, right? And this is what will shape opinion even in geopolitics, diplomacy, economic affairs, whatever you name it for the country. And that is why we are talking.
right? Second anniversary of REACH is a moment to celebrate, right? But what are we talking? We're talking about how much more can we do as citizens, youth and diaspora to carry the opinion shaping forward in India and abroad across world stages in our national interest. So this is the beauty of how a society, creates itself better. And this is how a nation creates better. And no nation creates itself better alone. It does require support of the diaspora to have a say in affairs worldwide. And I'm just about glad today that we are doing what we are doing today. So any questions I'm willing to take, otherwise we can go ahead, please. Yeah, thanks, sir. Gaurav ji, I would like to, I think I'll put forward the audience who are joining in the questions. Akshit, you can go on. Yeah. Thank you so much, ma'am. Jai Hind, sir. So my question is that what happened in the Balochistan airstrikes? Most of the people in India perceive Pakistan as the first target of the enemy, but they don't estimate the threat which China posed to us. So, do you think that airstrikes which happened in 2019 was a message for China instead of Pakistan? A good question, but I will answer it differently. Balochistan was an initiator and a sounding board for Pakistan that looked no further. If you continue, we have the will and prowess to do it. What we don't know is, and probably most of us is that when we struck Balakot, there was an Embraer flight which went from Delhi to Beijing that night, or the previous night. I don't remember the exact night actually today. And it carried a dossier that why the strike had gone through. And the reason was that there should be no kind of a unruffling of our intent by China on any platform. Now tell me, did you hear Chinese squeak even a word after Balakot? You did not, right? That is our power. So the message was that we have punished Pakistan for whatever we did, but obviously it was not a direct message for China in any which way. Let me also put a perspective here. Please do read some white papers from Chinese origin. You will realize China is embarked on a mission for the last about 2.5 decades for now. And the mission is to compete with US on the world stage as a superpower. And it has desired and designed its structure to grow first in the economic realm and then partially together in the military realm and finally expanding the military realm. That's putting it like a layman for you today. But while it was going through the economic surge, China utilized every tool outside the book. Money, wine, women, wealth, whatever it could do with, and buying out economic decision makers across spectrum in the world, right from WTO and everywhere else. It smartly played the developing nation card at that time and took on the industrial revolution, invited a lot many people, gave cheap labor, whatever it did. It had its own ways to do it. It realized in the last decade that yes, I have grown economically very powerful and I'm growing faster than I think. So it preempted and started doing the military part also as well. A lot of investments went into that sector as well. And China grew. And what happened to us? We were mired by Pakistan. Our politicians, and don't mind my saying, few of them were sellouts in our country, who kept that, kind of a communist Western kind of a narrative alive in cahoots with the Pakistanis, and they ensured everything went into the western side of our borders. The amount of money which flew into Kashmir, non-budgeted, budget is known to you, non-budgeted, was at least, if I'm not wrong, maybe 3 times than the budgeted. And when you look back in the eras of 90s and 2000 early, and if you were in Kashmir in the period of 2010, 11, 12, 13, 14 and beyond, you would have realized where did the money go?
Whereas China was always a threat in being, which was building itself. Somebody asked me, no names again, when Galwan happened. I was on a very funny call that night, and I don't know who the hell wanted my views that night. And I gave a lot of views. I gave them 17 suggestions. 16 and a half had been implemented by the government of the day. And they were funny suggestions. There was a callback to say, Valley, the kind of reserves you have created both in the northern sector and the western theater, there is enough with our country that in summers we put some, men and machine along the LAC. Next 5-7 years, you start building infrastructure like hell has broken loose. You create accretion of forces as you have money to go ahead. But summers take people there, even if you get them back for winters facing Pakistan. As per your assessment, you can do that. That much, money you have to burn. But you need to look at this aspect. And that is when I say we are a little behind when we see China. So even if we are trying to do a Balochistan, I don't think so it's a message for China. The message is yes, in the military realm, it's operationally always there, is that when you come along and closer to the LAC, and if we take that LAC to be the Tibetan region, which is still not the reversal of our status from the Vajpayee days, we still have a lot to do there. So you must have heard of the Chantan exercise we did in September of 2019, right? And thereafter in 2020, Galwan happened when the snow melted and June came about. So we have the prowess to do many things there. But to suggest that a Balochistan would deter China from its expansionist theories, to enable it not to hamper its progress in Tibet, I think they'll be far-fetched, because today, as we even speak, and we have had these kind of, border talks and whatever we have achieved out of it militarily, I think China is doing a great job in building infrastructure in Tibet today, and it has got no option at all to continue with what it's doing. So similarly, we have no option but to continue with at least the infra development for today, to have, balance of posturing and shifting of our reserves as we want to. But in the future, grow beyond that 2.6 GDP, and believe you me, a lot of veterans come on many, debates everywhere. And they at times curse the government of the day, not this government or the previous government, but the government of the day, to say why India is only ranging between 2.2 to 2.6 of GDP. Firstly, that GDP is too high. But you must appreciate that India's got, 130 crores people, mouths to feed, well-being to be seen, prosperity, infrastructure to be developed. So when you see the scale, no government of, some sense is going to put 6% of GDP into defense. It can't be done. So you have to plan. You're already late by 3 decades. So you can't just put money and build up everything in the next 1 decade by saying my GDP of 8 to 10% will go into defense. It can't go. So you have to find solutions. But I'm happy that as a young man, you are thinking about, how political and diplomatic signaling is done by use as an instrument of power. In some measure, yes, that particular strike must have opened a lot of eyes worldwide. But the direct message was always for Pakistan. And I'm glad it was conveyed. And I'm very glad that we retained the intent to do it more often. Thank you, sir. Yeah. Gaurav Pradhan, sir, one question for you. Hi friends, it's such a pleasure to join this session. I joined a little late, but I enjoyed what Colonel Rohit was saying and many questions and all. I am Yash Moore, and I was in Ladakh just when this issue was hotting up, and I've served on line of control in Poonch Rajouri sector, been in Valley 2-3 tenures, and been in Punjab before that, seen Punjab insurgency at its peak, 89, 90, 91. So I've seen enough in last about 40 years, and now I'm a veteran, and I do write on all these issues, contemporary issues, whether it's Afghanistan or Ladakh or So instead of giving a monologue,
I don't mind, since I'm on the space, taking any questions from my backdrop. You wish to hear my views on Galwan, on China, on Afghanistan. There are a number of my YouTube videos or my articles are there. You can see my views. How I see the situation. I've been watching this region for last 30 years. 30 years I've been watching AFPAC region very closely. I've read whatever literature has come. Unfortunately, couldn't go to Afghanistan as a colonel. The trip was already planned. I was the team leader, but didn't take place because our embassy at the last minute was not willing to host a military delegation. But I wish to go there sometime or the other. I have friends in Afghanistan. I've trained with them. So anything you wish to ask, I'll be happy to answer them as frank as possible. Thank you, sir. Thank you, Yashmo, sir, for joining us panel. I will definitely come back to you. The next question is actually for Gaurav Pradhan, sir. Sir, do you think, sir, there is this section of people who are called right-wing, and they are trying to divide the Indians thinking towards the progress of the nation? There's a question from the audience. They feel that there's a conspiracy behind Modi government. Gaurav Pradhan, sir? Hello, Gaurav Pradhan, sir? Thank you, Gayatri ji. I'm there. Thanks, Colonel Dev. Learned a lot from you. And thanks for dropping the RDX information which was necessary. Gayatri, before I answer your question, and probably I'll ask you to repeat the question again later, but before answering the question, I just want to talk about the Afghanistan, which Colonel explained very well. And I want to take it from there, if you don't mind. Am I permitted to do that? Sir, the stage is all yours, sir. You are the guest. Oh, don't give me the stage, otherwise nobody will get the podium, I can guarantee you with that. Okay, I will take briefly 5 minutes of yours to understand Afghan. Colonel has very well explained from a military point of view. Let me explain from my point of view, which Gayatri ji, if you remember on Raksha Bandhan, we did a space for 3 hours. And with me, and I explained you Afghanistan, and if you remember, whatever I have said then has proven today. First of all, we need to understand very well, Taliban is not a name. Taliban is a combination of fractions. There is a fraction which is want to be in power, which negotiate, discuss, debate in Doha. There is a section which is sponsored by Pakistan, which has more than 60% of regular Pakistan army people. There is a section which is sponsored, supported by your Turkey, that is part of there. And there is a section which is still part of America. During my previous conversation, and I have written an entire calculation on my Telegram, which you can scroll up and read. I told you when people were talking about, and with due respect to my people, my friends here from media, especially TV9 guys, I respect you a lot. Please don't take it personally. I'm talking about the garbage medium which we face in India. And I would also like to say personally thanks to Shams Alam who has joined in. Shams Alam is a para swimmer, national level para swimmer. And I'm delighted that people from sports are also joined this channel. And I welcome Major General also and a lot of other forces people. So let me start. I told you that $80 billion junk was dumped in Afghanistan. Nobody believed me. But today, every media is showing that the choppers, the planes are non-operational, the Humvees are non-operational. Colonel, they have talked about the software, the reverse engineering. Yes, China is only known for reverse engineering in their life. They have never innovated anything. They have never done anything. The beautiful example of reverse engineering of China, apart from automobile and what they do with Ferraris and Rolls-Royce, is during Osama bin Laden
operation in Quetta, Pakistan, a Black Hawk helicopter crashed, and the Marine burned the helicopter and went with another one. Next day, there were 4 Chinese engineers with Pakistani army people, and they have taken that helicopter, the burned out helicopter, as a cargo to China. 3-4 years later, you saw the stealth aircraft coming out of China. So that is the level of reverse engineering. So whatever is left in Afghanistan, 99% of the stuff doesn't require any reverse engineering because are broken, they are non-usable. The C-17, one of the C-17 or C-130 which is left there, couple of them left there, they are all non-operational and they will not be operational in rest of their life. So what is this guns which were packed in cargo containers and shipped to Pakistan? This is a payment which is made by Biden administration, or rather I would use the word not Biden administration, the CIA. This was the payment done by CIA to Pakistani ISI. How? The simple thing is that before the US left Afghanistan, there were drone strikes. So the question is where the drones were taking off. If they have to take off from a ship, an aircraft carrier, they have to cross the entire Balochistan. They have to then enter Afghanistan. Iran is not an option because it is a no-fly for US forces. So that means they have flown from a land base, Air Force station. That was Pakistan, because if you remember, while Imran Khan said absolutely not to the bases to US, the Bajwa, which is actually the power, never said anything. So these guns, light arm infantries and small guns were delivered to them as a payout for Pakistan. But the problem is here. They have given the guns, they have not given the bullets. So now the Pakistan need to ask America and pay them for bullets, out of which a deal would be done, and America will take a pie out of it, whether that pie could be cash, kind, bases, or containing China or something like that. So this is the history. Second, what is happening in Afghanistan? Trust me, I am the only chill out person in this world probably who is smiling on what is happening in Afghanistan. Because while we can talk about the military, which military people can talk about, and their experience definitely is much better than me on an operational level, the fact is the whole fight, the whole turmoil in Afghanistan is not because of any military supremacy or to get any military supremacy or to get Hindu-Muslim with the buffoons in YouTube and our TV media talk about regularly. I'm sorry for using the same word as Colonel Dev. They are buffoons, so I don't trust buffoons. The whole fight is all about trade. And the trade, the indication is that recently the Chinese ambassador in Doha met the Taliban and proposed a Peshawar-Kabul CPEC. They want to extend CPEC from Peshawar to Kabul. The problem is, what is Pakistan? Pakistan has only 2 USPs. One is the geopolitical location, geostrategic location, which they have. Second, they are fanatic about Kashmir. So I can tell you as a non-military person, but because belonging to a certain set of, what word should I use, certain set of people in the same diaspora of think tanks, Kashmir is gone from Pakistan. The only thing is POK, and Afghanistan will deliver the POK to us. How?
The Northern Alliance, because Peshawar to Kabul is one route, but the major CPAC runs from POK to Gwadar Port. It has to cross length and breadth of Balochistan. Balochistan, the brother who is going to head the Afghan government as of today, is a Baloch. So what China is trying to do is Peshawar-Kabul route so that they can extend via Iran to Chabahar Port. Now you remember, for Chabahar Port, China has already signed a 25-year agreement with Iran. So you extend that route, get into Afghanistan, which more or less would be peaceful in a couple of years, and with the Wakhan corridor, which is between Tazak and POK, is the Afghanistan territory, enters directly into China, which is, they have a border sharing with China. That is the whole game is. Because like Colonel Dev talked about Quad, and I have always said that anybody who is talking about Afghanistan and not talking about Quad doesn't understand Afghanistan or the whole geopolitics in this region. For a simple reason. The maritime route currently, which China uses, is a heavily populated route, which can be blocked by Taiwan, which can be disturbed by Singapore, which can be disturbed by India in Andaman Nicobar, because there we have the listening post and Indian Navy posted. So that China need alternative route. If it find a route around Australia, it would be 3-4 times much longer route, which is commercially not viable. If it goes over the Russia to reach Europe and US market, that is not possible because the sea is frozen for 10 months. They have to make an icebreaker, and it would be a turtle run rather than an actual ship sailing. So these things are to be taken in consideration. So China want a route to enter the sea. Now China has 3 options. First option is via Myanmar, because there China already have a pipeline from the sea crossing Myanmar horizontally and going into the China. And that is the reason Aung San Suu government was coupled and was not allowed to form the government even by winning by 90% margins, because the Myanmar military works for China and China doesn't want her, because having her means the people are already 90% anti-China in Myanmar, then China pipeline would also be a problem. So having a road or rail network is ruled out. The second thing is which China want is Doklam. Via Doklam and countries Sikkim and Arunachal Pradesh, China want to enter the Bangladesh, and vertically going down Bangladesh, they want the Bangladesh port, which they propose to build a Bangladesh port. But here you also remember that India countered that by inviting Bangladesh into the Quad. This is the reason why Bangladesh was invited into the Quad. This is the reason why there is a gentleman by the name John who joined the government as a minister. And many people, in fact, the social media buffoons and TV guys, start talking about how can you have a missionary in a government. The point is, look out the location where his constituency is. That will tell you the whole story. It is right on the chicken neck. So this is the national security reason he has been brought in there, because now the church will increase and the madrasas will reduce over a period of time, and demographic changes happen, and Vatican people doesn't listen to China. So that is another counter. The third route which is there is the CPEC via POK, Pakistan. The Pakistan is already in turmoil. Afghanistan is a better route through, so that they can reach the Chabahar port. So this is the whole story. And if they go by Afghanistan, the return of investment on the investment by China would be double, because now it is not just for
good transport, import and export from Chabar port, but the mining which they do in Afghanistan, the mines they want in Afghanistan, which worth close to about $5 trillion in total value. China can use the same route, rail network or road network, whatever they build, to transport the minerals and other stuff to China, because China ultimate aim against US is to be the world manufacturing power, both in terms of product, services as well as agriculture good, and that is the reason China owns a lot of land in entire Africa where they produce agriculture and they bring it to China and export from there. So this is the story of Afghanistan. Afghanistan, as I said, people make my joke that is another thing, but the fact is Afghanistan is not Hindu-Muslim. Afghanistan is purely trade. And why this Hindu-Muslim angle comes in? For one simple reason, Islam, other than Sanatan Dharma, all other religion, and rest are religion, not Dharma. Dharma is only Sanatan. All the religion have grown up or born in certain way of ideology, in certain ideologies. Like Sikhism, it is all about serving. Buddhism is all about meditation and peace to the world. But Islam has adopted the violence part. It believes in forceful conversion. It believes in imposing its thought forcefully using the gun. China beautifully uses Islam for its expansion to the world in whichever part of the world. And China sponsor all this with $3.3 trillion forex reserve. They have enough muscle to sponsor all these Islamic people around the world. And I won't call it Islamic people, I should rather call it the modern day Islamic people, to spread the violence, because if people have understood history pretty well about China, their original thought is strangle your enemy with its own system. So they strangle you with your own system, and India has a lot of fault line, be it labor union, be it caste-based divides, be it reservation, be it religion-based fights. But in 2014, many things changed. And the first thing what was necessary, which previous speaker has spoken about, before 2014, Pakistan never had a problem. Financially or otherwise, they never had a problem. They had a huge lobby in US because they had the money to sponsor the lobby. The lobby only works for money. Trust me, the lobby doesn't work for religion or believe in that you are good or I am bad. They don't have that mind. Their mind is all about money, and Pakistan has it. So what this Modi government has done day one is cripple the economy of Pakistan. And the first step they took was demonetization. The demonetization crippled Pakistan to left, right and center, that today they cannot even buy a bullet. So all their arms and forge and everything, they are all standing useless for one simple reason: they don't have money. And that is the reason they will play. Second point is, then Pakistan was systematically dumped into FATF, in grey list. And I have respectfully would like to disagree with anyone who believes that Pakistan should be in blacklist. I can assure you from our diplomatic side and my thinking and my thinking of my team that we are not pushing Pakistan for a blacklist, because blacklist means in a year or two there would be exodus on border, and no military in the world, be it Indian Army or anybody else, can stop that, can fire on the people, lakhs of people who cross the border. I don't think we want that kind of situation to arise. That's the reason a blacklist is ruled out completely. A grey list is much better. Halal is something much better than Jhatka. So that is my stand on Afghanistan. I am ready to answer any question on that. But Afghanistan is not done yet. The game is about to begin. And India, as a policy,
military policy is very clear, no boots on the ground under NATO. I think all the forces people who are part of this space today would know that India is very clear in its policy, no boots on the ground under NATO. But we have no objection to put our boots on the ground under UN peacekeeping. So watch the space today in geopolitics. Lot of things is going to happen because we are not active in Afghanistan for now. And I agree with Colonel Dev that most of the media and social media buffoons talk about weak government or not. Your government has done what none government has done in the last 75 years. We are today strong. Many people say there was a story that 150 people were abducted in Afghanistan, Hindus, and by Taliban and all. I can tell you this, there was a message sent to Taliban leadership. If people are not, if they are abducted, and if they are not released and escorted to the airport by Taliban, within next 1 hour, we will launch our missiles, and that would not be to the Taliban fighters, but that would be on Taliban leadership. So we have a very strong government who know how to take the charge. One thing which I missed out to tell you is very important. When I talked about the routes and when I talked about the third route, which goes via Wakhan border inside Afghanistan, remember there is Northern Alliance there. And that Northern Alliance is not going to allow Chinese route. So China wants peace at any cost in Afghanistan today so that they can develop their route via Wakhan border and going via Northern Alliance area, Panjar and all, right up to the Kabul, because Kabul is 150 kilometers from Panjar. Sorry? This is Deepak. No, just wait. Let's finish and then you can call to listener. So this route is going to affect. This route is very well want Afghanistan what China want, but if this route happens, who will be the greater loss? It would be Pakistan, because where is Pakistan income coming from? Pakistan income coming from CPEC, and with already $69 billion burnt and nothing is moving in Pakistan on CPEC, China is pissed off with Pakistan. And remember this thing loud and clear in your mind. China interest is not in your Kashmir. China interest is not in your religion. China is not interested in anybody's religion, country, relationship, friendly, whatever. China interest is only its trade route and business. That's loud and clear. So China uses countries for a trade, nothing else. That is what is going to happen in Sri Lanka with Hambantota. That is what is happening in South Africa. That is what is happening in Nigeria and all other places. I even don't remember the name. So this is the story. Now, if you have a question, you can ask me. Yeah, आरिफ जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए. आरिफ जी ने रिक्वेस्ट किया था. हेलो आरिफ जी. आरिफ भाई जी नमस्कार. नमस्कार भाई. हिंदी बाकी सारे लिसनर्स भी बोल रहे हैं. यशमोर जी या कर्नल साहब जवाब दे सकें. वैसे मैं अफगानिस्तान की सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, और जैसे कि अभी गौरव जी ने बताया, कर्नल साहब ने कुवैत के बारे में बताया, तो मुझे एक फियर है कि कुवैत के मुकाबले पे एक अलायंस बिल्ड हो रहा है रीजन में, जिसको चाइना यूज कर रहा है. और जैसे प्रधान जी ने, कर्नल जी ने बताया अभी कि चाइना की पहली कोशिश ये है कि ग्लोबली वो अमेरिका का मुकाबला करे और इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के तौर पे वो अमेरिका के मुकाबले पे आए. तो चाइना इज लीडिंग एन अलायंस ऑफ एविल फोर्सेस लाइक. अब अफगानिस्तान के लिए इन्होंने पाकिस्तान की मदद तो हासिल कर ली तालिबान के लिए टू टेक ओवर. इवन आज भी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद काबुल पे हैं और वहाँ पे वो पंजशेर वैली को टेक ओवर करने के लिए पाकिस्तान की जो असिस्टेंस है वो दे रहे हैं तालिबान को. लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक बहुत बड़ी चीज डेवलप हो रही है जो कहीं न्यूज में नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ लोगों के रास्ते में हूँ
जो मुझे ये बता रहे हैं कि चाइना ने एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान के पख्तूनों को ये पावर कराया है कि हम आपकी मदद करेंगे ड्यूरन लाइन को खत्म करने के लिए। आपको पता है कि पख्तून ऑन बोथ साइड, पाकिस्तान के भी और अफगानिस्तान के, वो ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते और तालिबान भी ड्यूरन लाइन को ओपनली कहता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो चाइना ने कहीं ना कहीं ये पावर कराया है कि हम आपकी मदद करेंगे ड्यूरन लाइन खत्म करने में, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल को पाकिस्तानी पख्तून भी तालिबान के सपोर्ट में आ जाए, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। आरिफ भाई एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे हैं, आपने काम करा है। पेशावर में कितने पख्तून हैं? पेशावर से ज्यादा तो कराची में पख्तून है। नहीं, पेशावर में कितने हैं? कराची में तो मुझे पता है, पेशावर में कितने हैं? पेशावर में सर मेरा ख्याल है तो 5 मिलियन होंगे। 5 मिलियन होंगे। अब दूसरा सवाल मुझे आप बताइए, वजीरिस्तान कहाँ पर है? वजीरिस्तान तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, फाटा में, एक्स फाटा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। पिछले साल कोरोना में दिल्ली में एक बवाल मचा था कि एक शख्स जिसका नाम मौलाना साद था, जी, उसको पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मौलाना, आप एक बात सोचो, 130 करोड़ के देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रात को कोई मतलब चलता फिरता आदमी तो है नहीं, कोई हम जैसा मामूली इंसान तो है नहीं, 130 करोड़ के देश का है, फौज भी उसके साथ है, सब कुछ है। वो रात को 2 बजे 7 जैसे 2 पौड़ी के मुल्ले से मिलने क्यों गया? जी सर बताइए। मतलब बड़ा साफ है, कुछ तो स्ट्रेटेजिक रीजन होगा ना। जी। मौलाना साद हमारा वो काम वजीरिस्तान में करेगा जो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो जो पेशावर से काबुल का रास्ता सीपेक का प्लान करा गया है, वो इसीलिए प्लान करा गया है कि ड्यूरन लाइन को खत्म करो, और पाकिस्तान को अब भारत 4 हिस्सों में नहीं तोड़ेगा, चाइना तोड़ेगा, क्योंकि ये चाइना के इंटरेस्ट में है। जी, इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे सवाल का पार्ट 2 बाकी है। जी, तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है पख्तूनों की चाइनीज के साथ, एक और डेवलपमेंट हो रही है। मेरी कुछ बलोच दोस्तों से बात हो रही थी, तो बलोच कह रहे हैं कि हमें दुनिया में कोई मदद नहीं कर रहा, अमेरिका और वेस्ट तो हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करके बैठा हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। भारत पता नहीं क्यों पीछे हट रहा है हमारी मदद से। तो कुछ बलोच लीडर अब चाइना को अप्रोच कर रहे हैं, हेल्प अस गेटिंग बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट and we will serve your purposes on CPEC and everything and we will go give entire security और आपको ग्वादर भी दे देंगे और ये वो, लेकिन हमें पाकिस्तान से आजाद कराओ। तो सर एक ये चीज जो डेवलप हो रही है और चाइना आस्ते आस्ते पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। तो आपने अभी जो कहा था कि चाइना विल ब्रेक पाकिस्तान, तो मुझे इसलिए ये बात समझ में आ रही है। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या ये फिर अलायंस जो बनेगा एविल का, जो चाइना की लीडरशिप में, जिसमें ईरान होगा, जिसमें बलूचिस्तान होगा, जिसमें ग्रेटर अफगानिस्तान होगा, क्या वो एंटी इंडिया नहीं होगा? क्योंकि चाइना विल नहीं आरिफ भाई, वो एंटी इंडिया नहीं होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि क्या वो होगा, सबसे पहला सवाल तो ये है। और अगर वो होगा तो वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है? जब आप बात करते हैं बलूचिस्तान की, पाकिस्तान लीड कर रहा है, अफगानिस्तान लीड कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन तो यहीं पर है, क्योंकि बलूच और पाकिस्तान एक साथ नहीं है। तालिबान की जो असली लीडरशिप है वो और पाकिस्तान एक साथ नहीं है, क्योंकि तालिबान का केवल ISL वाला जो कंपोनेंट है, वो हक्कानी नेटवर्क है, वो अपने आप को जो तालिबान कहता है वो पाकिस्तान है, लेकिन जो दोहा लीडरशिप है तालिबान की, जो पॉलिटिकल, वो नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अलायंस कभी भी नहीं टिकेगा। और ये सारी चीजें अब क्या होता है कि बलूच भाई जो हमारे हैं, उनको खुल के, उनकी उम्मीद ये है कि खुल के कोई बात भारत नहीं करता। भारत खुल के कभी कोई बात नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो। भारत इनडायरेक्टली काम कर रहा है। आज के टाइम में भारत बलूच को ही नहीं,
बल्कि कराची में भी है, वजीरिस्तान में भी है और पंजाब में भी है। और वहां पर हम अपने तरह से इन चीज में नाम तो लेना नहीं ठीक नहीं होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म क्योंकि मेरी बात को लोग पता नहीं क्यों छापना शुरू कर देते हैं, तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत ऑथेंटिक वे में बता सकता हूं। और जब मैं बोलता हूं बहुत ऑथेंटिक वे, तो आरिफ भाई आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं। हम बहुत इन्वॉल्व हैं। जो ये अलायंस बन रहा है वो बनेगा नहीं, पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूटेगा। इसीलिए मैंने आज से नहीं कई साल से मैं कह रहा हूं कि जो हमें पीओके चाहिए वो हमें अफगानिस्तान डिलीवर करेगा, और आप देखते रहना नॉर्दर्न अलायंस करेगा। आरिफ भाई, तो आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया जी, दे तो दिया, लेकिन अभी भी आपने कहा कि ये होगा नहीं, तो क्या बलूचिस्तान को हम चाइना के हवाले कर रहे हैं? नहीं, आप चिंता मत करो, बलूचिस्तान चाइना के हवाले नहीं जाएगा। वो केवल एक बलूचिस्तान का फ्रैक्शन है। जैसे भारत में भी एक पॉपकॉर्न कम्युनिटी होती है, और वो पॉपकॉर्न कम्युनिटी जरा सी हीट बढ़ती है तो वो उछलना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही कुछ हमारे भाई मित्र हैं बलूचिस्तान में जो उस तरह से उन्हें लगता है अभी आ जाए। बलूचिस्तान मैंने आज से 2 साल पहले लिखा था कि 5 साल का पूरा प्लान है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान डिलीवर होने में 5 साल 6 साल लगेंगे। तो आप इस बात से सरप्राइज मत होना कि 2024 से पहले बलूचिस्तान डिलीवर हो जाए। होपफुली सर, होपफुली। आदिक सर, आपका क्या व्यूज है इसमें? कर्नल आपका क्या व्यूज है? Can you hear me? Yes, I can hear. Yeah. So you heard Gaurav that what kind of interest we have in this region. I will not talk about the fault line and any plans whatsoever to break into parts, because that's not the diplomatic story, right? But suffice to say, what help needs to be given, I will just get into that. While the government will maintain the stoic diplomatic posture for the last 3 decades it has maintained, there is a help required by the below. In the backdrop of the Western countries trying to classify it as a terrorist organization or whatever, there is a lot of support sought by the Balochis currently. So many of the Indians in diaspora are also in many forums where we interact with the Balochi people and we understand what their pain points are. And one of the pain points is that their voice is not reaching where it should and ought to reach. And that is where we are trying to encourage a little bit of presence in through the new media, social media, whatever it's part of, and ensure that these voices of struggle, the voices of going under the oppression by the Pakistanis per se, is brought to fore. So you see sporadic, kind of small congregations in UK, US about this, and it doesn't get many eyeballs beyond that day actually. So that is something which needs to be done. So you all can think about how to do that, and that will be in the national interest here as well to process that cost. I'm not going to talk about what on-ground actions, clandestine actions could be taken. Let's keep it a little ambiguous currently. But I will just be open about the shaping of through the media and through platforms and say maybe groups like ours today. So we need to catch the Balochis' hand, stand together, and whatever fragment needs to be put out to the world, it must be done. Okay. Can I just come in on 2 issues, ma'am? Yeah. Yes, sir. Very interesting, very far-reaching kind of predictions, and really read like a storybook at many places. Fascinating. But as a strategic thinker and somebody who's seen this for a long time, first of all, let's come to the issue of Balochistan. The problem in Balochistan is they don't have a critical mass. Please mark my words, they don't have a critical mass.
unlike Bangladesh, they would have sooner or later got their independence because they had a critical mass, the entire population. In case of Balochistan, they are 43% of the land mass of Pakistan, but the population is just around 5-6% of their country's population. So there are too less people for that vast area to really shake up the Pakistan army and all. So the insurgency will continue, and I'm sure India is a great friend. I'll leave it at that. And China has huge problems there. In fact, there is a move to, blockade or put a fence around Gwadar town. This will be first town in the world where a 20-kilometer radius fence is coming up. It has been stopped because there's a hue and cry from people. So China wants their mere jo assets around the Gwadar port, they should be safe. And CPEC, we are aware some of the. So China is vulnerable there. So is Pakistan. In fact, he has raised an entire force bigger than a divisional size force only for security of CPEC, which of course China is paying. So Balochistan, without getting rhetoric and linguistic, will continue in this shape. But koi keh raha 3 saal mein, 4 saal mein somebody will deliver, please forget it. It's not going to happen. Okay, now we come to Durand Line. Durand Line, ma'am, nobody is going to accept. It was signed on 12th November 1893. 12th November 1893. And it divided the Pashtuns. We are aware of the great game, how the British, went there in 1839, and the biggest ever defeat in world history, where 20,000 soldiers went, एक ही बंदा वापस आया था वहाँ से, rest all were butchered by these Kabilis, and most of the soldiers of British Indian Army. A beautiful account has been given by Dalrymple, William Dalrymple. You must read this amazing book, Return of a King. बहुत अच्छे तरीके से documented है what happened. Now coming to Durand Line, got signed in 1893, never got ratified, and no Pashtun ever is going to accept it. What Pakistan has done, he has fenced this, almost the entire. जो जैसे हमने पाकिस्तान को fence किया, Pakistan has fenced most of it, or it's still trying to do जहाँ उसको interest है. This is going to create huge problems for Pakistan. And the blowback of this entire thing, Taliban or no Taliban or whatever power comes, Islamic Emirate comes in Afghanistan, the blowback will not be in India. The blowback is going to be in Pakistan. Because when you share spoils of war, that is when fights take place. And this medieval kind of mentality, tribal mentality, they have gone at each other's throat when it comes to, they've got victory, they've got some success now. And there will be, sharing of power will be a huge issue. And governing of this nation is going to be a huge issue. China has put its, hand up. Let us see how they perform there. But they are not going to send any military. Neither they are going to put any boots in ground. So that issue is there. They want to do their, trade and all that. The copper mine they have is the world's biggest copper mine, which is existing, but not a kg of copper has come out of it. China ke paas hai. China has signed a contract much earlier, much before Taliban came in. So when they start exploiting the copper and other minerals from there, it will take time. They will of course try to link it with the road and all that. So that will happen. As for Shah Bahar port, we are in talks. We constructed that road also from Dilaram to Jarang by our border roads there. But there's a rail connectivity required from Shah Bahar up to Iran. Somehow we must accept this. I see a lot of people are very government. We are very poor in executing projects even now, especially projects which are outside our country. It takes us huge issues, interministerial issues and other things. So I have been watching Shah Bahar now for as a scholar for last 15 years. Very little progress, we have made there. Whereas इस दौरान में चाइना ने कई पोर्ट बना के डेवलप करके लीज में लेने के बाद they're running them now because nobody was prepared to take them on. Said Amban port also was actually offered to us, but we didn't have, and we said yaar isse acha apne desh mein port bana le. Why should we go and build a port in some other country? So our issues are different, and I understand we are doing our best possible there, but somewhere I think we didn't read the situation correctly in Afghanistan. That is a fact, and we were surprised. Probably because we were banking too much on US, and this is what happens when you bank on a power, which will move with its own pace and will just leave people wherever they are. They have done it repeatedly. They have spoiled the entire situation. So I think somewhere
we have, but जो भी हो गया सो हो गया. अभी I don't want to be analyze, उसमें अब कुछ कर नहीं सकते. But now onwards, I think we have taken baby steps to talk to Taliban, and our interest will lie in whatever form they come. The government comes there. If we are not, we must be somewhere there to talk to them and not only protect our assets. We are immensely loved in Afghanistan. Not many people know this. We are immensely loved as a nation. जितना हिंदुस्तान को लोग प्यार करते हैं ना, अफगानिस्तान में किसी को नहीं करते हैं. And the most hated people in Afghanistan are the Pakistanis. I can't tell you the word on a decent forum like this. The word used for Pakistani in Afghanistan. So we love the people love us. We love the people, but somehow we have to make the pitch with the new dispensation of the government that comes. I'm sure we will do it in time. So this is what I thought is my analysis. Dispassionate, no zingoism, no rhetoric, not giving huge thing. It will happen. POK, somebody will deliver you. Balochistan, somebody will give it to you. Pakistan will break into 4 parts. Nothing like that is going to happen. Ethnic issues will continue, and these are blood borders. Someday they will get solved. I don't know, not in our lifetime. And this will happen from inside. I don't think it will require any for us to do anything major. It will happen on its own whenever it has to happen. General, with due respect, let me tell you something which I strongly believe in. And I strongly believe in that these things, the egg had to break from inside. An analogy I always believe in, and the egg should be breaking from inside. But trust me, India has been laying its egg in Afghanistan or Baloch or other part of Pakistan, not today, or we haven't woken up today. We are there for a very long time. We have been there for a very long time. दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट ये समझने की जरूरत है, और इस बात को मैं जानता हूँ, आज मेरी बात को कोई नहीं मानेगा, कि अमेरिका का बाहर निकलना अफगानिस्तान से, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल प्ले करा है भारत ने. ये बात आज समझ में नहीं आएगी, शायद अगले 2 साल समझ में नहीं आएगी लोगों को, लेकिन ये एक सच्चाई है. किसी माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी कन्वर्सेशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, और ये हमारा डिस्कशन पॉइंट हुआ है कहीं कुछ सीरियस लोगों के साथ. हमारा रोल आज का नहीं है. अगर आपने मोदी जी का ट्वीट पढ़ा हो 2016 का, तो उस ट्वीट में, और वो मैंने अपने उस पे मैंने भी कमेंट दिया थे, और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, कि Afghanistan would be a land for Afghanis, by Afghanis, for Afghanis, ruled by Afghanis. ठीक है, तो ये तबका हमारा, हम आज नहीं जगे. हम अफगानिस्तान की प्रिपरेशन 2014 में कर चुके हैं, और वो ही हमें आगे लेके जा रही है. इसलिए हमारा इन्वॉल्वमेंट आज का नहीं है अफगानिस्तान में. हमारा इन्वॉल्वमेंट Sadly, we were left high and dry. We were not even on the high table. Please, आप ये किसी का conversation quote कर रहे हैं, but the reality, the picture we have to see. We can't be. I agree. I think we were nowhere. Let me tell you, we were nowhere. We were caught napping. ये मान लेना चाहिए, please. हमें ना, as professionals, and if we are as scholars, we should see things in a correct perspective and not get invaded by somebody's. Sir, with due respect, let the time prove it. We were there, right? Let the time prove it, because with due respect to everyone, each one of them, and you also, sir, because I have a huge respect for veterans for specific reasons. When I say something, it is not a quote by somebody from some section, but it is a very serious thought which I put in, and with blessings of God, whatever I have said in history in the last 7 years has been proven. It's just that the matter is, when I say something, it takes 6 months, 1 year, 2 years to prove it. But just let's put it on a side. Let's wait for the right time to get it proved. I think everybody is listening here, and they will recall where the things will happen. I can put a break on this conversation.
Let's agree to disagree. Abhiyogi, you wanted to say something, and then I will move on to the questions. जी गायत्री जी, thank you for giving me a chance. नमस्कार आरिफ जी, गौरव प्रधान जी, कर्नल RDX, आप सब की बातें सुन रहा हूँ तब से, और मैं भी रीच का को टीम का कार्य करता हूँ और बहुत आप लोगों से सीखने को मिलता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और जैसा कि आज आप इस पूरे टॉपिक पे जो हमारा मेन पॉइंट था कि सेकेंड एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हम करना चाहते थे। तो रीच आपके लिए एक ला रहा है नया प्रोग्राम, जिसे आज पहला एपिसोड हम एयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है संवाद विद आरिफ अजाकिया जी। तो आरिफ अजाकिया जी हमारे जो है ना इस प्रोग्राम में आया करेंगे हमारे साथ, और इसमें हम डिस्कशंस किया करेंगे आपके मुद्दों के बारे में, जो बातें आप हमसे चाहते हैं पूछना, उन पे हम विश्लेषण किया करेंगे। तो रीच का ये प्रोग्राम आएगा हर सैटरडे। आज पहला एपिसोड हम लोग लाइव करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और अब मैं आरिफ जी से कुछ कहूँगा कि आप इसके बारे में बताएं। आरिफ जी जी, जैसा कि अभी जी ने बताया, हमने कोशिश की है कि पब्लिक को इन्वॉल्व करके एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें आप सवालात कर सकते हैं और हम आपके उसका जवाब देंगे। जो हमारी स्टडी है करंट अफेयर्स के बारे में, जो हम हमारे अपने सीनियर से सीखते हैं, वो हम आप तक आगे रखेंगे। जी धन्यवाद। जी बस तो थोड़ी देर में हम वो प्रोग्राम लाइव करेंगे और आपसे लिंक शेयर करेंगे। तो प्लीज अपने कमेंट्स हमें दीजिए, और आपकी बात हम इसमें करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। इसका नाम इसलिए हमने संवाद रखा है, इट्स अ डायलॉग, इट नीड्स टू बी डन इन अ गिव एंड टेक फैशन। तो आप भी अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी बातें बताइए, और हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उन क्वेश्चंस पे रिसर्च करके और डेटा लाएंगे और उन पे हम बात करेंगे बेसिकली आरिफ अजाकिया जी के साथ हर शनिवार। आरिफ जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द रीच टीम फॉर स्टार्टिंग ए न्यू डिस्कशन। हमारी सेवाएं अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम चाय भी सर्व कर सकते हैं आपको आपके रूम में, और बात भी कर सकते हैं। प्रधान जी, आप तो हमेशा ही मोस्ट वेलकम है, और आप जैसे गुरु जो अपनी स्ट्रेटजीज हमें बताते रहते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस विद यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव प्रधान। गायत्री जी, तो हम सीखते हैं और गाइडलाइंस हमें बिल्कुल मिलती हैं कर्नल रोहित जी से, आपसे, और जितने भी सीनियर हमारे दोस्त हैं। थैंक यू गायत्री जी, अब आप वो क्वेश्चन पूछ सकती हैं जो आपने पूछा था, रह गया था अफगानिस्तान को। मुझे लगा वो क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी। राम माधव, एक्चुअली बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। राम गुप्ता जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए, देन अक्षित यू विल गो नेक्स्ट। नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नमस्कार, और रीच चैप्टर के लिए सेकेंड एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। मैं एक ही बात यहाँ पर सभी वेटरन से और सभी थिंकर से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक तरीके के, मुझे लगता है, दो तरीके की लड़ाइयाँ लड़ रहा है। एक तो हिंदुस्तान के बाहर जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, और जो कुछ भी हम अपने हॉट बॉर्डर्स पे और जितने भी नेबरिंग बॉर्डर्स पे जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, या जिस तरीके की डिसरप्शन या जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और दूसरा एक जो इंटरनल लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो या तो फंडेड है, या फिर लेफ्ट लीनिंग है, या फिर बॉट आउट सोर्सेज हैं, और वो सब लोग जिस तरीके का एक एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चाइना का हो, या फिर चाइना ने हमारे एरिया ले लिया, या फिर पाकिस्तान का हो, या फिर हमारा नुकसान अफगानिस्तान में हो गया, इतने इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। ये सब जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, इन सबको हैंडल करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की एक बहुत अच्छा रोल है जो हम लोगों को प्ले करना बनता है और करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं तो उस सब में हम लोग पार्टिसिपेट करें, बट हम लोग कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं, रह जाते हैं, आपस में एक दूसरे को ना सपोर्ट कर पाते हैं, ना ही बातों को उठा पाते हैं। मैंने रीच को देखा है, जब भी मैं किसी भी तरीके की कोई भी चीज रीच तक के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, हमेशा मुझे उसमें रिस्पॉन्स मिलता है। कर्नल RDX आपका रिस्पॉन्स मिलता है। ये मैं अपनी नहीं बात कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जनरली जो अच्छे थॉट है
वो हम लोग स्ट्रेट जनरेशन वॉरफेयर के चलते उतना प्रमोट नहीं करते। तो इसका कोई सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए मिल करके, सोच करके। बड़ा अच्छा सवाल है। इसका बहुत सिंपल सा आइडिया सोल्यूशन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहली चीज, आप एक चीज ये समझिए कि भारत को तोड़ने की या भारत में विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है। उनका मेन उद्देश्य बड़ा सिंपल सा है कि भारत डेवलप ना करे, क्योंकि अगर भारत डेवलप करेगा तो अमेरिका, देखो दुनिया में 4 मार्केट हैं, बाजार हैं। एक बाजार है अमेरिका जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, दूसरा बाजार यूरोप है, तीसरा बाजार अफ्रीका है और चौथा बाजार इंडिया है। इंडिया को मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा जबकि वो सबसे बड़ा बाजार है दुनिया में आने वाले समय में। वो इसलिए क्योंकि हमारा लोकल प्रोडक्शन है। अगर हमारी लेबर लॉज सही नहीं बनेंगे, अगर हमारी एसएमई पॉलिसी सही नहीं बनेंगी, फाइनेंशियल पॉलिसी सही नहीं बनेंगी, रेट्रो टैक्स की पॉलिसी सही नहीं बनेंगी, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट कहाँ है? उसका बेनिफिट चाइना को है, क्योंकि चाइना में कंपनियां रहेंगी, वहां पर बनाएंगी माल और भारत को बेचेंगी। तो इससे लड़ने का तरीका क्या है? इससे लड़ने का पहला तो रूल बड़े सिंपल है। पहली चीज, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत का बना सामान खरीदें। दूसरी चीज, हमें अफवाहों पे बिलीव नहीं करना है, हमें रिएक्टिव नहीं होना है सोशल मीडिया पे कि आपने कोई चीज सुनी, उछलना कूदना शुरू कर दिया है। अपने नेतृत्व को, भारत का जो भी नेतृत्व है, आज ये है कल दूसरा होगा, जो भी नेतृत्व है उस पर सवाल करने शुरू कर दिए। और इस तरह की बातों में बहना नहीं है हमें। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, और ये लोग सक्सेसफुल लेफ्ट वाले हैं या चाइना स्पॉन्सर्ड, लेफ्ट का है चाइना स्पॉन्सर्ड है, मीडिया क्या है चाइना स्पॉन्सर्ड है, तो ये लोग क्यों इतना तोड़ने के लगते हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल सा है कि अगर भारत डिस्टर्ब रहेगा, मैंने आपको क्या बताया, चाइना की आज की नहीं, चाइना के जन्म से चाइना की एक पॉलिसी रही है। भारत में आजादी के टाइम से हम तो खैर हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए बकवास कर रहे थे, लेकिन चाइना की एक पॉलिसी हमेशा से रही है माओ के टाइम पे कि स्ट्रैंगल योर एनिमी विथ इट्स ओन सिस्टम। हमारे अब ब्लैक लाइफ मैटर क्या था? ब्लैक लाइफ मैटर अमेरिका का इंटरनल एक प्रॉब्लम थी, एक फॉल्ट लाइन थी जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करा। आप कोई भी इवेंट उठा के देख लीजिए दुनिया में, वो उसकी इंटरनल है, उसका पीछे हाथ चाइना है। जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा रियल एनिमी पाकिस्तान नहीं है, हमारा रियल एनिमी चाइना है। और मैं आज से नहीं, पिछले 10 साल से एक एनालॉजी यूज कर रहा हूँ, हमेशा मैंने बताई है, वाटरमेलन एनालॉजी। वाटरमेलन ऊपर से हरा होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है जमीन पे, लेकिन अंदर से लाल होता है। चाइना अंदर से लाल है, ये दिख नहीं रहा है बाहर से, हरा हमें दिख रहा है। तो हम हमेशा हिंदू मुस्लिम में लैंड कर जाते हैं, लेकिन चक्कर ये मुस्लिम का जो बुर्खा पहना हुआ है चाइना ने, इससे वो प्रोटेक्टेड है और इसी को वो अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है नेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो बड़ा सिंपल सा है, हम प्रोवोकेटिव ना हो, रिएक्टिव ना हो, ज्यादा से ज्यादा अपने भारत का बना हुआ माल खरीदे। मैं ये नहीं कह रहा सब, क्योंकि हम टोटली चाइना को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पिछले 10 साल में, इससे पहले की रिजीम में हमने बहुत कुछ चाइना के हाथ में दे दिया है। जैसे मेडिसिन बनाने की जो एपीआईज हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एक टाइम 95% चाइना से आते थे, आज वो रिड्यूस होके 65% हो गए। आपने कोरोना काल में देख लिया, हम एक भी पीपी किट और मास्क नहीं बनाते थे, अब हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट है, अब हम अपने मास्क बना रहे। तो चेंजेस हैं, लेकिन हमें संयम रखना है, हमें प्रवोक नहीं होना है और रिएक्टिव बातें नहीं करनी है। और अपनी कम्युनिटी में जो आपके मोहल्ले के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बीच में बात लेके जानी है, उनको समझाना है। सोशल मीडिया और ट्विटर आपके इलेक्शन नहीं जीतते हैं, इलेक्शन जीतती है जमीन। इसीलिए 2014 में लिखा था कि फार्मर और फौजी मोदी की पहली प्रायोरिटी रहेंगे। फार्मर मतलब उसमें लेबर भी आती है, फौजीज मतलब उसमें एजेंसीज भी आती हैं, और जो यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, वो सब आती है। और आप देखिए पिछले 7 साल में जो सरकार का रहा है, उसने फौज और फार्मर पे ही ध्यान दिया है। आज आपको एक चीज बताना, क्योंकि यहाँ पर फौजी बैठे हैं हमारे साथ, मैं नहीं जानता उनका रुख क्या है, लेकिन गलवान की जो लड़ाई हुई थी छोटी सी, उसमें कर्नल संतोष बाबू की जो सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस एक्चुअली एक
नॉर्मल सेक्रीफाइस नहीं है जैसे कि फोर्सेस में हमारे सोल्जर सेक्रीफाइस देते हैं लड़ते लड़ते, बल्कि वो एक लैंडमार्क सेक्रीफाइस है। और वो लैंडमार्क सेक्रीफाइस ये है, और बल्कि मेरा मानना है कि भारतीय फौज को कर्नल संतोष बाबू का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उनके जाने से उनके काम से एक बहुत बड़ा जो स्टिग्मा अटैच था भारतीय फौज के साथ, वो स्टिग्मा हट गया। और वो ये था कि चाइना की फौज बहुत मजबूत है। जो संतोष बाबू ने सेक्रीफाइस देके करा, उन्होंने ये मिथ तोड़ दिया जो चाइना वॉर के बाद हमारे अंदर घुस गया था कि चाइना बहुत स्ट्रांग है, फोर्स उनकी बहुत स्ट्रांग। और जैसा मैंने हमेशा बोला है, चाइना की फोर्स एक ऑर्नामेंटल फोर्स है। चाइना की फोर्स एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट, दे ऑल हैव ऑर्नामेंटल फोर्स, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल फोर्स। चाइना की फोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल आर्म है, मतलब क्या बोलना चाहिए हिंदी में, आर्म्ड हाथ है उनका पॉलिटिकल। जबकि पाकिस्तान की फोर्स प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि एक इस्लामिक फोर्स है जो इस्लाम के अंडर में चलती है। इसलिए वहाँ जनरल की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, वहाँ इस्लाम की ज्यादा वैल्यू है। भारतीय फौज और फौजों की तरह, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, एक प्रोफेशनल फोर्स है। और गलवान वैली में हमने ये साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, if the rule is not to use weapon to defend yourself in a territory, we will honor it even by giving our life. And that is what has been proven in Galwan Valley, which is respected across the world in all the forces. So, Santosh Babu's sacrifice has lifted Indian Army to a very high pedestal today for our ethics, for our warfare, for our promises what we make and make the commitment. Thank you, sir. Rohit sir, मेरा एक क्वेश्चन था on the garrison at Rishikor. So how this place Rishikor was harvesting militants of Pakistan like sympathizers. So is India keeping a watch on that zone? India has many eyes, so no worries there. I don't want to dwell into it. Let me just highlight two things what came out from Gaurav ji right now. So I will put it at rest here that the mettle of the Indian armed forces, and especially when we put boots on ground anywhere, whether within our own territory, across the border, along the LC or LSC, that mettle has never dwindled actually. So the bravery of Santosh and bravery of people going back to the Siachen takeover, your bravery of people in 71, 65, and against all odds, the resolute bravery and perseverance against an adversary who was stronger in 62, to not leave your post and lead by example as a military commander, has galvanized our forces since they were actually formed. So apart from some small instances of whatever you may say defeat otherwise, the man has never dwindled under any enemy threat, and that has been the hallmark of our forces, which we should take a lot of pride in. And Completely agree. I personally take a lot of pride in that, and that is why you will find when you talk about how to express emotion, I generally write, if you can follow my handle completely, I write for every man who has given up his life for the honor of my nation, our nation, I write glory to the brave and Jai Hind. I don't castigate anybody into any kind of a regimentation or otherwise. At best what I do is for my own the arm from where I come, I may write a line extra, but I retain that every man who's recruited in the Indian Army is brave at heart and is brave at taking the ultimate decision to sacrifice for the nation. Aberrations are there in all organizations, it may be, but by far, as far as we are concerned, we have proved the mettle of a human endurance and sacrifice right through our history. So let's take a lot of pride there and continue. And I owe it to you, Gaurav ji, when we meet, I will tell you what happened in Galwan, because there are many things which
you all are just not aware. Colonel, there are a lot of things which we cannot talk on public platform. Yeah. So we'll do it offline sometime when we meet. One thing I can tell you, if Gaurav Pradhan is visited Kashmir 25 times after 5th of August 2019 till date, then there is a reason that I'm not going for a tourist purpose. I understand. There is no reason to be a tourist there. We have much more task, culled out for ourselves there. That's good. Right. So we are there, and the question was basically lingering around from the audience speaker. I think Ramji spoke was about how to build a narrative and counter some narrative. I would say, and I've said it earlier in the show as well, please use all instruments, big and small, towards this opinion shaping effort. Nobody is big here. Dr. Gaurav Pradhan may have a lot of insights. General Yashmore may have a lot of insights. The rest of us may have limited insights. But in whatever capacities we are, there are no celebrities towards national causes. We are all excellent. Excellent. That is what I always say. We are all citizens first, and diaspora is an extension of our citizenship across our borders. And nobody, Gaurav said one very good line. I like that part because I keep reiterating in my talk shows as well. The enemy is very well knit. The enemy, right? The enemy within, the enemy outside. You can keep saying toolkit, Soros, China, Pakistan, 5 names of media here, 10 names of New York-based media. Everybody is, out, some Greta, somebody else. It all keeps happening, right? If you follow, all of them are well knit socially, on social media and new media. Very well knit. Precisely. So I did a poll. I'll give you an example. And I did a poll, and there was some funny name called Team Ban or Team Ban, whatever they call themselves, right? So I nudged them towards a question. I put a question out, and in the last 1 hour of that polling, when I went through the entire thread line, each one of them is trying to reach out to as many number of people in 140 characters to say, please come there and defeat this channel for polling, right? Yeah. And from Pakistan, from Europe, from everywhere the handles were showing, they were all trying to come together. Whereas we, the people who are on the right side of the right side of matters, are always divided. I mean, how many of us actually currently here? There were 800, 900 people when we started this space. How many of us follow each other? Just because Colonel, you are absolutely right. You face the backlash on your polling, right? Think about me. I have a FIR on me for molestation. I have a defamation notice on me for that. I have another one. A bunch of jokers, after my life, doing my character assassination, where the fact of the matter is I have never been a part of any political party in this country in my entire life. I have never visited any political party office in this country in my entire life. These are the facts. But nobody believes that fact because they are run by a narrative, and these people create narrative for one simple reason, that they are paid. That is the biggest problem with Hindus is. The right wing, the biggest problem is the money, because everybody is more interested in making the money rather than standing for the nation and doing, because national service is not about making money. If I am charging 400 rupees to you or 500 rupees to you to answer a question on national importance or Sanatan, then I am not doing national service or Sanatan service. I am actually making money. I am into a business of it. And when you run a business, you are never 100% correct. I challenge any agency in India, government authorized agency, to come to my home 24/7 by 365, attach my laptop, I will open all my bank account, show me $1, 1 rupee credit from anybody to write a tweet or write a post.
Right. No, see, सर मैं भी यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि आपको तो डेमोक्रेटिक भारत में FIR का सामना है, हमें तो यूनाइटेड इस्लामिक किंगडम ऑफ लंदनिस्तान में पाकिस्तान के राज्यों में पता है तन से जुड़ा था। सही बात है आरिफ भाई. Imagine that Arif ji, there is a lot of threat to you as well. So let me just finish what I was alluding to first. So three things. One is the portion of right, which we discussed earlier in this session as well. See, there is only one right. There's the right side of the story and the narrative and what is right for my nation. There's only one right. There's nothing left in the nation. It's only leftovers. So time has come that if you are the right thinking mindset for the right of your nation, then you must come together. And there are no egos. There is nothing called a blue tick with 7 million followers, who can't follow somebody who's got 4 followers. That's wrong. That's a wrong narrative. So you have to get together. Second is the edifice. And briefly, Gaurav ji was hinting there. Let me clear that. America vows itself on various principles enshrined in their constitution and how they have become a nation state of such a great strength. And what did the Chinese do? A Black Lives Matter in normal America, not the Trump era, would have been an incident which would have been, just a normal thing of law and order and addressed. But since it was Trump, BLM became striking at the edifice of American culture and societal pattern. And they took it out how? Because China controlled the money power in most media which was shaping the narrative that time. True. Then came the COVID. You go back to Bill Gates in 2015, he talks about, something will happen in the era of, this political party and towards the end of tenure. COVID, right? And COVID was played like a tom-tom to get that man out. So finally the man was, taken out of office. What is there today? Today, the US is faced with a worse than a Vietnam pullout from a country after 20 years of investment. Today, there is again pandemic and Florida is flooded and whatever variant of Delta or non-Delta has taken over. There are deaths galore and misery galore. But where is the media? So you imagine how narratives are controlled. And that is where I appreciate that the power of the commoners like us is much more important to build the narrative. If I as a veteran today can speak to 5 people in a month, and out of 5 can share the opinion in my national interest for only 2. So I am quite sure in a 54-week year, I will shape at least 120, 200 minds or whatever the calculation is. That is the way to proceed. And since we were never united and we have now got enough reasons to unite, and I am saying it with a lot of conviction, in national interest, either you are right thinking, right doing, or you are a leftover. And you don't give credence to the leftovers, right? Today, ISI chief visited Kabul, right? Imagine a scenario. He visited. I'm quite sure we are not on debates today on the television, but half the channels would be debating, and somebody will be shouting at the Pakistani, stooge who has come with the ISI narrative on a WhatsApp and talking on a show. All that will be happening. Tell me if none of the Indian channels carried this entire visit of that ISI chief. Didn't carry it only. Because what the government has to do, it will do in any which case. But you are giving handle and mileage to, inconsequential people who you have put upon yourself as a big enemy. Correct. Why are you giving credence when Amit Shah went to Davangiri the day before and did a lot of projects, inauguration? Did it come up in any media in Pakistan? No. Right? So, obviously, the prosperity part of India will never come in Pakistani media, but all the divisions we have created within ourselves will be exploited by our enemies, always and every time. And that is where the narrative has to be proactively shaped, not reactively after some occurrences happen. After one person is killed on the street, it is given a mom-jam of Hindu versus Muslim, and then we are doing all kind of, evidence shaping to say, no, it was not the case. Right, so our society itself has to become more aware and come to a maturity that we understand. And for that I've been saying for the longest time, education is the key. And please trace back the growth of education in our country for last 7 decades. You will find which government have defaulted on the basic premise of education.
you will find who all have defaulted on the basic patterns of infrastructure development, and you will find who all have defaulted to make sure we are a equitable society also, and not created so many, billionaires and so less of poor people. So that is the way to see and structure, and unless we have a societal change and a mindset change, and don't have qualms, just because you stand on the right side of history and right side of your nation, does not mean anybody will come from the Western media and browbeat you and call you names and typify you, bhakt, this, that, and blah, 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 and you get cowed down. No. Just don't even think about it. You continue in your mission. You don't hold an explanation to anybody who's a leftover, internally or externally. You hold yourself accountable to your nation. You will achieve much more for a nation, individually, collectively, and together. So this is the way to go ahead, and I hope we'll make it someday, better in the next decade and beyond. And unlike General Yashmore, I don't believe I'm dying so soon not to see a better future for my country. And General Moore will agree with me that while we are working together in all spheres of life, we'll do much better. RDX, Gaurav here. I just want to say this, that national service, it is our collective responsibility. हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति. हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, अपना दाल रोटी चलाते हैं. अपनी जरूरतों को सीमित करना सीखिए. लालच मत कीजिए कि आपको कोई 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देगा कुछ ट्वीट करने के लिए. देश के लिए आप अपना देश बेचना चाहते हैं 50,000 रुपए के लिए, आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं 50,000 रुपए के लिए. और दूसरी बात, आप हमेशा एक चीज याद रखो यह सबके लिए, कि जब आप किसी नैरेटिव के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करते हो तो आपका बहुत अपोजिशन होगा, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, आपको गालियां दी जाएंगी, हो सकता है आपके लिए केसेस फाइल करे जाएं. तो पहले तो मन से मजबूत हो जाना कि क्या आप वो चीजें फेस करने के लिए तैयार हो, और अगर आप तैयार हो तो आप मैदान में कूदो, और अगर आप तैयार नहीं हो तो शांति से अपना काम करो, अपने काम धंधे पे ध्यान रखो, प्रवोक मत हो, पॉपकॉर्न मत बनो, जीवन में पॉपकॉर्न मत बनो. थोड़ी बात सोचो. देखो, हर इश्यू के 3 पहलू होते हैं. एक पहलू होता है आपका, दूसरा पहलू होता है मेरा, और तीसरा पहलू होता है सच. और ये तभी हम सच पा सकते हैं जब हम रिजिड, अपने व्यू पे रिजिड ना होके समय देके उस बात को समझने की कोशिश करें, तभी हम सच हो सकते हैं. इसका कहने का सीधा मतलब है कि कल को कोई हेडलाइन आती है टीवी में और या न्यूज में कोई डिबेट होता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. बहुत सारे नए लोग हैं, वो शायद नहीं जानते होंगे कि पिछले 11 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है. मैं टीवी नहीं देखता, मैं कोई न्यूज नहीं देखता, मैं कोई पोर्टल नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अपनी बात को, कोई भी न्यूज होती है उस बात को समझता हूँ, और उसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख देता हूँ, और वो 6 महीने साल भर में सच हो जाती है. Hello. Thank you. I will go to the next speaker, that is Papu ji. आप अपना क्वेश्चन रखिए, then Akshay will come. गायत्री मैम, थैंक यू सो मच. सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव. सर, आप लोगों की बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था. मैं बहुत, मेरी एज तो नहीं है ना, मेरी बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इतना कहूँगा, मैं 2006 से लेके अगर 2021 तक की बात करूं तो मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा. हमने यह एहसास कराया, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं. हमने दौर बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का. हमारे जो वीर सपूत जो सीमा पे हैं, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं कभी किसी आर्मी पर्सन से मिलता हूँ और देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हमारे रियल गॉड हैं. मैडम, अभी किसी ने संतोष बाबू की जिक्र किया. जब मैंने उनके इस इंसिडेंट के बारे में सुना था तो रियली मैं बहुत ज़्यादा सैड हुआ था, क्योंकि जो आर्मी के लोग कश्मीर के अंदर हैं, मैं कई बार कश्मीर गया हूँ, देखा हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि उनका मकसद केवल एक चीज़ है कि खेलने दो पतवार हमें, कल फिर यह दिन गहे न गहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे. ये एक खूबी है. मैं यहाँ एक क्वेश्चन कहना चाहूंगा मैडम. मेरे मन में एक क्वेश्चन बार बार उठ रहा है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रॉ
बनाया गया था। और जब फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस समय मोरारजी देसाई ने जो निर्णय लिया था, उसकी वजह से रॉ और मोसाद जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे पाकिस्तान के परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, सब कुछ सेटल हो गया था। लेकिन हमारी सरकार ने एक गलत निर्णय लिया, उसकी वजह से आज हमारे सर पे एक परमाणु संपन्न देश बैठा है जो हमें रोज धमकियां देता है। अब वही एस्टेब्लिशमेंट जो हमने इस 6-7 सालों में अफगानिस्तान में किया था, अब वही एस्टेब्लिशमेंट हमारे हाथ से निकल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे लिए सेटबैक होगा आगे चल के? मेरा क्वेश्चन यही है कि जब मोरारजी देसाई ने उस इंफॉर्मेशन को पास किया टेलीफोन पे, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जो हमने पढ़ी है, उससे रॉ का एस्टेब्लिशमेंट और मोसाद का, दोनों का एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय हुआ था। हमारे जासूस और मोसाद के जासूस हम पकड़े गए थे और मारे गए थे। अभी वही कंडीशन, वही एस्टेब्लिशमेंट हमने अफगानिस्तान में बनाई इन 5 सालों में, और वो भी लगभग डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि तालिबान जो है पाकिस्तान के पलड़े में खेल रहा है। मैं क्लियर कर देख पा रहा हूँ खेल रहा है। मैं आपको शॉर्ट कर दूं, आपने सवाल जो पूछा है उसका सवाल मैं जिस समझ गया। पहली चीज मेरे मित्र, भारतीय रॉ खत्म नहीं हो रही है और भारतीय रॉ खत्म नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आपने मोरारजी देसाई की बात की, वो तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, ज्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं था। सबसे बड़ा इंसिडेंट था आई.के. गुजराल जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 200 एसेट्स के नाम पाकिस्तानियों को ऑफिशियली दे दिए थे, और पाकिस्तान ने उस रिटर्न में अपने एसेट्स के नाम नहीं दिए थे, और लगभग 243 एसेट्स हमारे बूचर करे गए थे, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए थे। वो एसेट्स हमने 14 से बनाने फिर से शुरू करे। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी में, दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, एक एसेट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपको पकड़ा बोल दिया खबर दे दो। एक एसेट को ग्रूम करने में और बनाने में 5 साल, 10 साल, 20 साल बहुत लंबा समय लगता है। तो ये आप मत सोचिए, और तालिबान में भी ऐसा नहीं हो रहा। तो अब जब तालिबान की बात आती है, जो आप बोलते हैं, आप ही लोगों ने शोर मचाया था। मैं आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, मेरा मतलब राइट विंग से खास तौर से है कि ये 4500 वीजा दिए गए हैं, ये घुसपैठिए आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हमारे एसेट्स हैं उनको सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उन पे इन्वेस्ट करा है। उनकी जरूरत हमें कल भी हो सकती है। तो हो सकता है उस 4500 लोगों में हमारे एसेट, मुझे नहीं पता, मैं कोई ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें वो भी हो सकते हैं, वो लोग होते भी हैं। तो ये आप अगर सोच रहे हैं तालिबान के आने से हमारे एसेट्स पे कोई प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सर मेरा क्वेश्चन था, जो एस्टेब्लिशमेंट हमने किया था वहाँ पे, जिसकी वजह से हम सेफ थे। हमारे यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो 2014 के बाद किसी मेजर सिटी में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। उसका अगर श्रेय देंगे तो हम देंगे अफगानिस्तान को। वहाँ से हमारे एसेट्स जो थे ऑपरेट कर रहे थे। अभी वहाँ पे तालिबान आएगा, चाइना के हाथ में खेल रहा है। नहीं, इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये मिस इन्फॉर्मेशन है जिसने भी आपको दी है, तो इस चीज को तो सुधार लीजिए। इन चीजों पे खुल के बात नहीं करी जा सकती है, ना मैं आपको बता सकता हूँ। बस मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हम सेफ हैं, सेफ थे और आगे भी सेफ रहेंगे। और जो भी एजेंसीज होती हैं जहां पर भी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। कैसे करना है उस चीज को डिस्कस करने की, पब्लिक में डिस्कस करने का कोई फोरम नहीं होता है। Let's avoid this kind of questions actually which can threaten our security. Akshay, your turn next, and then VV Bhatia ji after that. Akshay? Yeah. Thank you so much, ma'am. Again, I have to say something. Sir, आपने भी से बात की थी राइट विंग की. Sir, I just want to tell you, right wing is a myth. यहाँ पे सिर्फ एक ही विंग है, that's India wing, who supports and advocate for nation. शाबाश बेटा, शाबाश, very good, very good. This is what I like.
Okay. तो सर अब मैं क्वेश्चन सर यहाँ पे मेरा ये है to RDX sir, as you know that how mischievous US is, and as per the reports, they have left and they have hidden the cash and the ammunition. So is that true? And is it the indication of US to raise a Tajik army to counter Taliban? That's my question for you. Right. So very, very short. Two statements. You have seen the movie Mission Impossible? Yes, sir. There is a old CIA, code which was used there. I can neither confirm nor deny. That is part one of your answer. The second part is that US, whatever we say or think, let's go beyond that. And let's limit ourselves to say that US and India have a strategic partnership and we understand each other much better in the last 6 years in decades. So, Gaurav ji was trying to briefly hint at that we have been a part and parcel of shaping this. I will give you only an itinerary of the US Secretary of State before the pullout happened. And there was a 2+2 meeting which was held. And you understand what 2+2 is, right? The external affairs and the defense ministers both sides meet. After that, when the pullout mission was launched, so Secretary Bill Clinton traveled from US to whatever place and landed in Russia. The next port of call in terms of the important players was to India. And the last port of call was to Pakistan, which was a summation of what we have decided and how it needs to be executed. So if you understand this, flight path, and you can probably extrapolate to understand what kind of weight India carries and what kind of a weight India and US relations carry. Contrary to many channels who are today browbeating about a distinct US failure, which on certain aspects it is a huge failure. Contrary to our belief that India has been sprung a rabbit out of the hair in this particular case, we have a definite understanding of how it was supposed to be. We are also having that understanding what contingencies could come up. And till now, nothing has played up which is totally adversarial to India's viewpoint and the joint viewpoint of India and US. So I think if you allow us, we will leave it this at this point. If you are in India and wherever you live, you can DM me. Whenever I visit your township, I will explain to you then much more in greater detail, but only one-on-one, not on an open platform. I just want to add what Colonel said, and I completely agree with them. But I give you 2-3 pointers. Think about that. I'm not explaining it to you. I'm just saying, think about it. Point number 1. A prime minister of a nation of 130 crore, do you think is an idiot who will visit Pakistan to some wedding ceremony for a cup of tea with the Prime Minister out of nowhere? No. Second point. Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, is now safely in London under certain cover. Think about it. How? Second, before the pullout of US, the National Security Advisor of Afghanistan, in place of meeting India later or Pakistan or any other country, meets Nawaz Sharif, who has ran away from his country and living in London in exile. Do you think it is ordinary? No, it is not ordinary. So when you connect all these dots, you will really understand the game we are playing for a very long time in Afghanistan, and to stabilize the region and in the best interest of the nation. That is Bharat. Okay. Yeah, Akshit, because there are so many people who wanted to ask questions, I'm very sorry. Abhi, can you go next? Because we have all to wind up the session. गायत्री जी जस्ट वन पॉइंट फ्रॉम माय साइड अभी हियर जो प्रोग्राम की हमने बात की थी जो हम लॉन्च कर रहे हैं अब
वो हमने अभी लाइव कर दिया है अपने YouTube चैनल पे, संवाद विद आरिफ अजाकिया जी, द फर्स्ट एपिसोड। तो उसकी लिंक हम शेयर करना चाहेंगे, जो व्यूअर्स हैं वो जाके उसको देख सकते हैं और उसके बारे में फिर कमेंट्स दे सकते हैं। बस इतना कहना था। Thank you. And as per Colonel Rohit sir, how he said that to follow each other, please make your bond strong as a nationalist and follow each other. ये भी एक रिक्वेस्ट था। अरे मैं तो नहीं कर सकता ना कर्नल रोहित, मैं तो बेचारा गरीब आदमी टेलीग्राम पे बैठा हुआ हूँ एक कोने में, मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ सकता। आप लोग चाहे तो टेलीग्राम पे आ जाइए। Gaurav ji, as long as we have telegram and telepathy, it will work. Okay, perfect. Super. I was about to say telepathy works, Dr. Pradhan, don't worry. Yeah. Okay, Avi, Thai, you can ask your question and then I'll move on. Yeah. Sure, Gayatri ji. Thank you very much for giving me this chance, and many congrats to reach for this success of second anniversary. My question is very simple. Like, we have been watching this for a while, and we have been hearing this. Earlier, we used to get compared to Pakistan, but after 2014, we got compared from China. That is a success, and as a heap, I can say a heap success in terms of as a nation. And we can only understand when we're sitting outside the nation, because हम अभी जहाँ पे हैं हम वो proud feel कर पा रहे हैं जो कि हम पहले नहीं कर पा रहे थे. Now the question is, when our Prime Minister has been recognized on a global platform, अब तक की जितनी बात हुई है उसमें $1 trillion worth of resources left at Afghanistan, hue and cry from the feminine generations over there, ये सब चल रहा है. उसमें इंडिया का स्टैंड अभी तक किसी ने कोई प्रॉपर तरह से डिस्कस नहीं किया, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पावर दे आर एक्चुअली लुकिंग इनटू दिस कि किसी तरीके से तालिबान को हम केवल वेट एंड वॉच करें. तो उसमें इंडिया का क्या व्यू निकल के आने वाला है? भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने कछुआ देखा है? हाँ श्योर सर. कछुआ अपना शरीर केवल उतना भार निकालता है जितनी जरूरत होती है, ठीक? और इसीलिए वो 400 साल जिंदा रहता है, 500 साल जिंदा रहता है. और खरगोश जो है वो सारी जगह उछलता कूदता रहता है, लेकिन उसकी लाइफ 2 से 3 साल होती है. भारत की यही स्ट्रैटेजी है कछुए वाली. हम धीरे चलाएंगे, जहां जरूरत होगी वहीं अपनी शक्ल दिखाएंगे. पब्लिक परसेप्शन क्या है और पब्लिक क्या बात करती है और नैरेटिव क्या सेट करते हैं लोग, उससे, और फेमिनिस्ट खास तौर से क्या उछल कूद मचाते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो आप निश्चिंत रहिए. मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूरा डिस्कशन नहीं सुना, आपने कर्नल रोहित को भी नहीं सुना ठीक से. हमारी स्ट्रेटेजी है, हम अफगानिस्तान में हैं और हम प्लेट पे सजा के अफगानिस्तान को चाइना या पाकिस्तान के हाथ पे नहीं देने जा रहे. हमारा रोल है वहां पर. ठीक भाई? Sure. One more question, because Colonel is also there. It's a good opportunity to ask me. I mean, क्या चाइना 1962 की जो डिफीट थी, was it kind of a conspiracy or is it a real defeat? बेटा पास्ट में मत जाओ. मैं सॉरी, अगर कर्नल भी इसमें कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगा, क्योंकि अभी आगे देखना शुरू करो. जो डिफीट थी उससे हमने सीखा, एक स्टिग्मा था वो हमारे अंदर से हटा. अब आगे बढ़ो इसमें. और जहां तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात है, तो बेटा मैं आपको एक चीज साफ बता दूं. अभी किसी ने रॉ के बारे में क्वेश्चन पूछा था. रॉ की स्थापना हुई थी सितंबर 1968 में. फरवरी 1968 में एक विदेशी भारत आया था. इस भारत के पावरफुल परिवार में उसने अपनी जगह बनाई थी. तो उस विदेशी को और वो पूरा नक्शे को देखने के लिए 1968 सितंबर में रॉ की स्थापना करी गई थी. और रॉ नाम नहीं था, उसका नाम था कैप्सेक,
SEC कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके अंडर में थी, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में थी, और उसका काम था रिसर्च वर्क, किताबों का रिसर्च बना के बताई गई थी। तो कभी मौका लगा, मैं रिसर्च कर रहा हूँ सारी डेट्स के साथ, मैं आपको कभी सीक्वेंस बताऊंगा अपने टेलीग्राम पे, आपकी आंखें फट के हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप पुरानी उसमें मत जाइए, अभी हम आगे की तरफ देखते हैं। Okay, the next question is by E.R. Udit Pratap Rana. Udit, if you can ask, otherwise I'll go to the next. हेलो। Yeah. हाँ जी। सबसे पहले तो सभी मेरे बड़ों को नमस्कार, साथ वालों को प्यार और छोटों को प्यार। और मैं एक बात यहाँ पे खुले मंच पे कहना चाहता हूँ कि ये जो गौरव प्रधान सर हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। 2016 से मैं इन्हें फॉलो करता हूँ। इन्हीं की वजह से गायत्री जी मैं आपको फॉलो करने लगा हूँ, इन्हीं की वजह से मैं कर्नल देव को भी फॉलो करता हूँ, आरिफ अजाकिया भाई को भी इन्हीं की वजह से मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं इनकी सारी बातें 2016, आई एम ऑल्सो इंजीनियर, आई एम अ मेडिकल इंजीनियर, मैं बहुत देसी सा लड़का हूँ, मेरठ शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं सर गौरव प्रधान सर की सारी बातें, सारे एनालिसिस 2016 से पढ़ता सुनता देखता आ रहा हूँ, और इनकी सारी बातें यथार्थ होती हैं। मतलब आई एम नॉट अ प्लांटेड मैन ऑफ हिम। अरे बेटा सवाल पूछो, अरे बच्चे सवाल पूछो इन चीजों में। सर मुझे सवाल ही नहीं पूछना, मैं अपनी सिर्फ कुछ दो चार बातें। अच्छा ठीक है, आपको 30 सेकंड देते हैं, आप खत्म करो। अच्छा ठीक है, अब मुझे टीवी डिबेट की तरह 30 सेकंड देते हैं, ठीक है। मुझे अपनी जो ये टॉप लीडरशिप है हमारी, मोदी जी, इन पे, अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इन पे और आपके जैसे लोगों पे पूरा विश्वास है। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ अभी अनुभव भी है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो मेरे ही बैचमेट है, अर्जुन भी है। मतलब हम लोगों की भी पूरी ब्रिगेड है जो हर तरीके से सारे लिबरल्स, ये फलाना ढिमकाना, जितने भी लोगों से रोज लड़ते रहते हैं। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, जो आपकी ब्रिगेड है ना, उसको कॉन्क्रीट काम में लगाओ। उस ब्रिगेड को काम में, ठीक है आप लड़ते हो, अच्छी बात है, ठीक है, हर नैरेटिव को काउंटर करना चाहिए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके जो भी साथी हैं उनसे बोलो कि अपने साथ के लोगों को, अपने से छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, सबको इकट्ठा करें, सही बात बताएं और देश को मजबूत करें। ठीक है, चाहे लीडरशिप आज मोदी जी की है, कल शायद किसी और की होगी, वो नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। इंडिया फर्स्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। उदित जी प्लीज, आपको हम रोकेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर श्योर मैम, श्योर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस टाइम, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। मैं जानती हूँ फैन बॉय मोमेंट सबका होता है, पर अभी थोड़ा सा हमें ठीक है, थैंक्स मैम, थैंक यू गौरव सर। लक्ष्य जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा जैसे जैसे काबुल की तरफ तालिबान बढ़ता गया, तो यहाँ भी तालिबान ने अफगान फोर्सेस की मदद की, और जो भी सरेंडर हुआ या कर रहा है, तो पंचशील के पास रकम था, लॉन्ग टर्म वॉर होगी, उसके बाद इतना वेपन सब चाहिए, उसके बाद टैंक्स भी है, सब कुछ है, वो कहाँ से? पाकिस्तान से बेटा, पंचशील की जो वॉर हो रही है उसमें पूरी तरह से 80 से 90% पाकिस्तानी फोर्स लड़ रही है, तालिबान नहीं लड़ रहा है, ये आप लिख के रख लो। मैं पूछा था मसूद की टीम के पास। हाँ, मसूद की टीम के पास अब वो चीजें खुले मंच पे नहीं बताई जाती है, मैंने आपको हिंट में सब कुछ बता दिया है। अब अगर आप रिवाइज करके फिर से सुनना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी नॉर्दर्न अलायंस का रोल क्या है, उस ज्योग्राफिक लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैंने आपको बताई थी। वहां से आप बेटा सारी बातें समझ जाओगे, बाकी खुले मन से मैं नहीं बोलूंगा अभी। ये सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि अभी कोरोना चल रहा था, तो कुछ एक्सपर्ट तो टीवी पे आके कह रहे थे कि इंडिया के पास एक LBC लैब है, न्यूक्लियर और केमिकल वॉर, तो मेरे को समझ में नहीं आया वो है क्या। वो कह रहे थे इंडिया को शुरू करनी चाहिए। अरे बच्चे इन चीजों में, अरे बेटा इन चीजों में क्यों जाते हो? ये चीजें पब्लिक डिस्कशन के सब्जेक्ट नहीं होते हैं बेटा।
ये हर चीज अब आपको न्यूक्लियर कोड में थोड़ी ना बताया जाएगा कोई आके कि न्यूक्लियर कोड 18 डिजिट का होता है, 118 डिजिट का होता है। तो बेटे इन चीजों में इतना ज्यादा दिमाग मत लड़ाया करो, ठीक है ना। और ये सारी बातें खुल के नहीं करी जाती है, 1 to 1 कभी मिलोगे तो बता देंगे, पब्लिक फोरम पे नहीं बोली जाता हूँ। Okay, Ulas, can you ask a question? नमस्कार प्रधान जी, मेरे को ये जानना था कि जैसे आपने कहा कि सारी आवाज ट्रेड के लिए, तो यूके को मिलने की तो प्रबल संभावना है, लेकिन ये अफगानिस्तान की माइनिंग सीन में इंडिया कहाँ पर है? चाइना की हम लोग बात करें, इंडिया कहाँ पर है उसमें? अरे इंडिया पूरी तरह से वहीं पर है जहाँ उसको होना चाहिए था। बट मैंने क्या बताया अभी, मैंने बोला ना, कछुए का शरीर उतना कछुआ दिखाता है जितनी जरूरत होती है। हम आपके देश का प्रधानमंत्री कोई फौजी नहीं है, और आपका देश का प्रधानमंत्री कोई पॉलिटिक, आपका देश का प्रधानमंत्री एक अव्वल दर्जे का बिजनेसमैन है। उसको बिजनेस समझ में आता है, और वो बिजनेस और इकोनॉमी से मारता भी है और जीतता भी है। तो आप चिंता ना करो, कॉपर माइन हो, लिथियम माइन हो, कोई भी माइन हो, हमारा हिस्सा वहां पर होगा। गायत्री जी, एक क्वेश्चन रीच की तरफ से मैं डॉक्टर प्रधान से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस डिस्कशन को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सर हम लोग विदेश में बैठे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं जैसे सिंपली सनातन करके एक चैनल भी चलाता हूँ, जहाँ पे मैं सनातन की बात करने की कोशिश करता हूँ, और रीच का सारा साथ हमारे साथ है उसमें। सर हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर कुछ गुरुकुल शुरू करना चाहें या वैदिक एजुकेशन शुरू करना चाहें, तो उसके लिए आप किस तरीके के पॉइंटर्स हमें देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सर आज की डेट में जितने भी इंडियन ऑडियंस है, वो सनातन को अभी भी बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से ट्रीट करती है, कि उसको लगता है कि इसमें हम जाएंगे तो हमको लेबल कर दिया जाए कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं या हम सुपरस्टिशियस हैं, और उससे बच के निकलना चाहते हैं। देखो बेटा, क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सनातन के साथ जो है वो ये है कि कुछ लोगों ने कंसेप्शन बना रखा है कि अगर हमें संस्कृत नहीं आती तो हम सनातन नहीं पढ़ सकते, हम गीता महाभारत नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, जब हम गीता महाभारत वेदों के ज्ञान करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें हम रिसाइट तो करते हैं उसको, लेकिन समझते नहीं है। अगर आप गुरुकुल करना चाहते हो या शुरू करना चाहते हो पार्ट टाइम शाम को या वीकेंड में अपने जो देसी सनातन बच्चे हैं उनके लिए, उनको ये मत बताओ, उनको श्लोक मत पढ़ाओ, ठीक है? हर गीता में पढ़ लो, कोई भी गीता उठा लो, किसी की भी लिखी हुई, या रामायण उठा लीजिए, वो श्लोक का एक हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। अपने अनुभव से ये देखो कि वो ट्रांसलेशन आज के जीवन में कहाँ फिट बैठता है। और उसके बाद, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब जो हमारे मन में एक बात है, ये और ये मेरा निजी विचार है, मैं इसको कोई अथॉरिटी के साथ नहीं कह रहा, हमारे मन में एक विचार है कि ये कर्म की शिक्षा थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। मेरा मानना ये है कि कर्म की शिक्षा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बाहर भी दे सकते थे। बैटल फील्ड में देने की मंशा ये थी कि अर्जुन के मन में से जो डर है उसको बाहर निकालना है। तो इस चीज को मैं, जब आप रिलेट करते हो कॉर्पोरेट लाइफ में, जब आप रिलेट करते हो पर्सनल लाइफ में, किसी भी पॉलिटिकल हो ना हो, मेन चीज जो इंसान को पीछे रखती है वो उसका फियर है। हमें फियरलेसनेस निकालनी है। दूसरी बात, हमें फियरलेसनेस बनाना है। दूसरी बात, जब हम रामायण का अध्ययन करते हैं तो हम रामायण के बारे में बात करते हैं, भगवान श्री राम के बारे में बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का पूरा जीवन या रामायण जो है, उनके महल से लेके वनवास और वापस महल में आने तक का जो 14 साल का जीवन है, उसमें केवल 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 2-3 चीजें। पहली चीज,
धैर्य सिखाती है वो। दूसरी चीज करेक्टर बिल्डिंग सिखाती है, भगवान श्री राम ने करेक्टर बिल्डिंग सिखाया है। और तीसरी चीज भगवान श्री राम ने सिखाया कि परिस्थितियों के हिसाब से हमारा आचरण तो बदल सकता है लेकिन हमारा करेक्टर नहीं बदल सकता। तो भगवान श्री राम ने रामायण में जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से वो ब्राह्मण हो गए लेकिन करेक्टर उनका क्षत्रिय था, वो उन्होंने नहीं खोया। तो अगर हम आज की प्रासंगिकता के साथ रामायण और महाभारत बच्चों को पढ़ाएंगे या समझाएंगे तो उनका इंटरेस्ट जगेगा। अगर हम उनको रिचुअल्स में डाल देंगे तो वो आपको ऑर्थोडॉक्स का लेवल हमेशा मिलेगा। इसलिए उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करके गुरुकुल बनाइए, अपने अच्छे अच्छे लोगों को लेके आइए जो विद्वान लोग हैं, वो बच्चों के साथ बात करें और उनको समझाएं आज की प्रासंगिकता के हिसाब से। धार्मिक लोग जो होते हैं जो केवल श्लोक पढ़ के चले जाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गौरव माना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं फिर भाटिया जी के पास जाऊँ। Yeah, just a quick one. What I'm trying to say is कि I know इससे पहले उदित बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे उनके फ्रेंड्स अनूप और वो सब लोग, जितने भी लोग उनके फ्रेंड्स हैं, मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक अगर आप लोगों को इकट्ठे रह के ये लिबरल्स के साथ लड़ना है या ये जो भी आपको एंटी इंडियन नैरेटिव को फैक्ट्स का टैकल करना है, तो मेरा एक आपसे गुजारिश है कि आप रीच के साथ ज्वाइन करिए। और ऑब्वियसली हमारा भी एक ही एम है, अगर आई थिंक हम लोग मिल के लड़ेंगे तो आप वो फोर्सफुली ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे कर्नल रोहित ने पहले बोला भी, आई थिंक हम लोगों को एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करना चाहिए और एक दूसरे के साथ बेसिकली मिल के काम करना चाहिए। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि जो भी स्पेस सेशन में है, प्लीज़ अगर आपको डीएम करके रीच को ज्वाइन करना है तो हमें बताइए, बिकॉज आई थिंक जितना मिलके लड़ेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है। आई थिंक गौरव जी भी यही बोल रहे हैं, कर्नल रोहित भी यही बोल रहे हैं और आरिफ भाई भी यही बोल रहे हैं। सो प्लीज़ मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सबसे, दैट्स ऑल। Yeah, Bhatia ji, yeah, please. So I have one simple question that recently एक social media या news channels में काफी आ रहा है regarding that couple of top universities have joined together for I think on 10th of September there's some program to Hinduism पे इसमें कुछ anti बोलने के लिए चल रहा है। So how we can counter it and who is starting it, who is funding it? तो ये बहुत सुन के बड़ा दुख होता है कि एक हिंदुइज्म पे एक टॉप यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व है। who's funding all this thing? This is a simple question. No, I think if you read the latest news that Stanford and I think Princeton and Harvard have pulled out that they are not involved at this. If I am right, Gaurav Mahanaji? Yeah, few of the universities have withdrawn their name. No, Gaurav Pradhan ji have more detail on it, but I think yes. So big ones, the Princeton, Stanford, and Harvard have already withdrawn from it. So basically, they pulled out. So it was only a faction of the percentage of students who was basically supporting it, and mainly it was not Indians. So that's how it was being supported. So essentially, a lot of these big ones have withdrawn from it because they will definitely not get the students from India anymore, isn't it? Otherwise, so I think a lot of that has already happened, and I'm sure government is working at the back end as well to kind of dismantle this. And there are a lot of there's another conference which we are having, which is sponsored by Reach as a media partner, which is happening in US in October, and I'll share the details of that on the Reach platform very soon, which is about actually talking about Hindutva in different universities across Texas and Orlando, in Florida, in those two states. And then we are going to do a lot of conferences in states like Washington and New York as well. So wherever these big universities are, we are attacking them, and we will do a counter conference as well on top of it in October. So yeah, wait for that. It has been programmed at the minute in terms of how it's going to happen. But Texas and Florida is already organized, and I'll share the details for that to be held in October first week very shortly. Thank you. Thank you so much. And there's a petition going around also. You can avail that. I can direct message you to sign that.
So yeah, next person is Kamlesh Gupta ji. You wanted to ask question and yeah. हेलो जी we can. आचार्य जी को श्री चरणों में प्रणाम। हेलो, प्रश्न पूछिए। नहीं मैडम, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरे को टेलीग्राम पे इतने सारे आंसर मिल जाते हैं कि मैं उसी को नहीं कर पाता, और मेरे को गौरव सर को प्रणाम करना था, उनके श्री चरण को स्पर्श करना था। आपको बहुत आप आशीर्वाद, आप बहुत बहुत खुश रहिए, तरक्की कीजिए, स्वस्थ रहिए। बस आपसे ज्ञान मिलता रहे, शिक्षा मिलती रहे सर। ओके, थैंक यू। मोहित जी आप अपना क्वेश्चन रखिए। अक्षित देन यू गो नेक्स्ट। जी थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हमारे इंडिया से और इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इंडिया में लागू करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं जापान की जो मतलब नेशनल लैंग्वेज उनकी जापानीज है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, ठीक है, और हर देश की उनकी खुद की जो मेन लैंग्वेज है उसको वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि संस्कृत जो सारी भाषाओं की और अगर कोई चीज पसंद नहीं आई तो रिटर्न में 1 महीने से ऊपर लग जाता है, तो पूरी गवर्नमेंट अपने पैसे वापस आएंगे। हेलो गौरव जी, योर माइक आई थिंक देखो भैया, संस्कृत का जहाँ तक सवाल है, बड़ी सी सीधी सी बात है कि संस्कृत को आप सरकार पे हर चीज डालते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार भी वही करेगी जो आप चाहेंगे। आज आप खुद निकलिए घर से और 20 स्कूल में घूम के आइए, आपको वहाँ जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत के टीचर मिलेंगे, और आप स्कूल वालों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर जर्मन की क्लास में 40 बच्चे हैं, फ्रेंच की क्लास में 45 बच्चे हैं, तो संस्कृत की क्लास में केवल 2 बच्चे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद पढ़ाना नहीं चाहते। ये अवेयरनेस सरकार नहीं करेगी, ये अवेयरनेस हमें करनी है, ठीक है। इसलिए हर चीज सरकार के ऊपर डालना, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार के ऊपर डालना उचित नहीं होता है। कुछ काम हमें खुद भी करने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र सरकार का नहीं है। चंद चुने हुए लोग आज हैं, 10 साल राज करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये देश हमारा है, हमारे बच्चों का है, हमारे परिवार का है, हम सबका है। वो हमें योगदान खुद देना पड़ेगा। गायत्री जी? Okay, yeah, sure. Next, Akshit, can you go on? Then I'll ask Vishal. Yeah, ma'am, I just have to say one thing, that the initiative which has been started from you is awesome. But I just want to say one thing, that I'm also associated with a handle called Hindu IT Cell. If you guys want to work with us, we are happy to go with you. That's the message for you people. Thank you. Okay, thanks. Gaurav Maharaj, that was a proposal for you. And yeah, Vishal ji, please go on. Yeah. Vishal ji, please ask question. नमस्कार everyone. मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। प्रधान सर, आप हेलो क्या गो ऑन? जी, मैं थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। गौरव सर, मुझे 2 चीजें, मतलब मेरा 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि जैसे कि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारी चीजें कि अचानक से ऑपोजिशन ही कह लें तो गवर्नमेंट का स्टैंड पूछते हैं तालिबान और अफगानिस्तान पे। मुझे उसमें कुछ स्पेसिफिकली नहीं जानना है, बट मुझे एक चीज ये जानना है कि जैसे हम लोग अभी अपने लोकल में भी कई लोगों को डिफेंड करते हैं, तो राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है? जैसे तैसे भी हम लोग इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं। पहले तो आपके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप में था तो बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती थी, कम्युनिकेशन आपके ट्विटर पे भी हमें मिल जाता था। और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि अगर हमें
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं है, और हमें इसमें कोड करके किसी को काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो जाते हैं अगर हम लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि 40-50 साल से जो हम लोगों की जो जिसको कहते हैं लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट कह सकते हैं या कुछ भी कह लें, एक बहुत बड़ी गैंग से हम लोगों को लड़ना है। और हमारी इंफॉर्मेशन 2014 के बाद में ही हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया है, अपने नेशन के साथ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वरना उससे पहले तो हम लोगों ने जो भी कूड़ा कचरा पढ़ा, इतिहास झूठा सच्चा कि किसने क्या किया, सभी लोग महान बताए जा रहे थे, एक ही परिवार के लोग। तो अब हम लोगों की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू भी हो रही है और हम लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं टुवर्ड्स नेशन। तो राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से जुटाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो और हम छोटे छोटे जो हम लोगों के साथ में डिबेट होते हैं। बेटा देखो राइट आप म्यूट करो। देखो, राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको सरकार के काम पे लेनी है तो आप नमो ऐप से ले सकते हैं, जहां पर सारी चीजें अपडेट होती हैं। कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है तो PIB से लेते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हैंडल से ले सकते हैं। फौज की इंफॉर्मेशन आपको आर्मी के हैंडल से मिलेगी, वहां से ले सकते हैं, या फौज के जो स्पोक्स पर्सन है उनका हैंडल है। तो हर इन हैंडल से आपको, आप मेरी बात पे बिलीव मत करो, आप किसी की बात पे बिलीव मत करो, ये ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मीडिया को मैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मानता हूं, क्योंकि उनका बिजनेस केवल TRP ओरिएंटेड रहता है, तो कई बार मसाला लगा के बातों को बात करते हैं। अंतिम बात ये करूंगा, सेल्फिश है कि अगर आप मेरा टेलीग्राम पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं ज्यादातर चीजें मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मैं लिखता हूँ, वो काफी है। वहां पर मैं तथ्य लिखता हूँ, एनालिसिस लिखता हूँ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। गायत्री जी? Okay, yeah, sure. Yeah, I was busy in removing certain speakers. रोहित जयराज जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, पहले आप तो वेटरन हैं। नमस्कार। रोहित जयराज जी। हेलो। हेलो। प्लीज। थैंक यू मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। मेरा क्वेश्चन कर्नल रोहित जी से और डॉक्टर प्रधान से है कि सर, पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उसके बाद क्या गवर्नमेंट स्टेबल होने के चांसेस है? बिकॉज वॉर लॉर्ड्स वहाँ पे बहुत है, नंबर 1। और सेकंड क्वेश्चन पार्ट है सर कि अगर तालिबान इज सक्सेसफुल तो क्या ये दोबारा कैलिफेट के लिए चैलेंज नहीं होगा सर? एक थैंक यू रोहित जी. So just keeping it short, we'll see how it comes around and evolves. There are no guarantees for internal stability still. You can create a government at the face value of facade or whatever to run it initially, but to gain more recognition and to internally be stable is something which we'll have to see how it goes. Apparently today does not seem to be the case. It's going to happen that way, and you are right in pointing out that the factions will have their own stake. When you create a government, out of the 5 main groups, if 1 or 2 are feeling left out, obviously there will be tussles which will continue both politically and also in terms of those warring factions there. So I don't see exactly any stability coming, at least anytime soon. April, May is the time period what I'm looking at for little stability of this government. But the internal factions will be striving to achieve more. So there are going to be no hard and fast solutions as of now in the coming couple of years. I agree with Rohit completely, Colonel Rohit. I agree with you completely, and that is also my stand. But at the same time, we also need to understand that in last 20 years, Taliban faction of Doha or the political Taliban understands very clearly that nothing they can win with a war. They have to grow and stable their relationship with the world, for which they need a political maturity, and they have to fall in line with the global scenario, or rather say that the global guidelines they have to follow. But as Colonel Rohit said,
another 6 months. I would rather add another 1 year. Need to be seen. Taliban story is not going to be over in next 1 year. It is going to develop over a period of time. We need to keep a watch how it develops and what shape it takes. Thank you so much. I'll take another 2 questions and then I'll wrap it up the session. I promise I'll bring one next time RDX sir and Gaurav sir to answer all your questions because it's been like 3 hours running. And Ashish ji, if you can ask a question. Yes, my question is from Colonel Rohit. So, if there is a complication in Talibani government and chaos in Talibani government, what will be the implication on Pakistan from this point of view? And second question and last question is that how your own calculation works on it, that how long it will continue, this government of Taliban. Maniji, please switch off your mic. Hello. So the second part is very easy. So that is only God only knows until when they will stabilize and continue. But coming to the first point, Pakistan has made many gains and inroads as it is currently visible. What is apparently not visible today is what are the repercussions on Pakistan of this kind of a faction or a group of factions forming a government. It is not going to be hunky-dory for Pakistan once all the 5 major groups and everybody else, including the pressures of Committee of Nations on this government. I do not think Pakistan will enjoy the status of being the sole provider of power and everything else to this government. It won't remain as such, especially in the backdrop of the opportunities which now the Western world and also countries like India and others see that we can turn it around in a larger way for things to happen even against Pakistan. So this internal stability in the AFPAC region is something which is not going to get weaned away into a stabilized mode. It will remain destabilized for a long haul now. And that is where the advantages what Gauravji was alluding to earlier in terms of other parts of Pakistan, Balochistan are going to start, having their roots spread into Pakistan side and beyond. So that is the way I look at it. And I don't see it's early jubilation days for Pakistan. They think they have won some great war. But it's going to come back at them at a stage now starting, with this stability of the factions within Taliban. And like it has been very clear and known to us that traditionally, civilizationally, we have a deeper connect with Afghanistan in terms of stability, whereas Pakistan has always been an opportunist to cash on to the weakness and, the division between the warring factions in Afghanistan. So it's for Pakistan to look out for it, and I think the instability will be more in the AFPAC region here on and towards Pakistan. Sir, I have one question that is going in my mind. That's why Qatar was chosen as the place to decide these peace deals, as it is even cut off from the Arab world. But why Qatar was specifically chosen? Okay, so for end inputs, I don't know where to stop, but Gauravji will limit himself probably as per the end input. Let me give you a layman's term. Go back in history and see who were the funders of the so-called Taj which Pakistan wanted to wear as the Islamic Caliphate long time back, and list those countries in the Middle East. You will find Qatar is one of the prominent, allies there in terms of funding. So when you are looking at creation of a government and a contingency which involves terrorist groups, Al-Qaeda, everybody else, they were the same people who were getting funded through Pakistan for other reasons as well. So we'll limit it at this because currently diplomatically we are making some different kind of overtures also to these countries. We have had our people going ahead to contact them for the last 7-8 years, and the differential in coming to terms with our argument, it will take time for a few countries. Most of the Middle Eastern countries have aligned themselves with our theory of Pakistan being a propagator of terrorism, but the others like Turkey and everybody else may or may not come in the same fold.
but countries like Qatar are somebody we are talking to diplomatically as well. So I will not be going ahead to be anywhere little more critical of what Qatar has funded till now in yesteryears. But insofar as the future is concerned and the World Cup coming up in 2022, I believe Qatar is learning the right lessons as it should. Okay, sir, we have a request from a Pakistan person. Should I accept? He wants to ask a question. Yes, please, Gayatri ji. On your channel on this Reach UK, I have always said the questions are always welcome from anybody. Be my critic, be my hater, be my follower, anyone. You can ask anything to me. Okay, औरंगजेब जी, you can ask your question. आप अपना question रख सकते हैं, औरंगजेब जी. आप हिंदी में बोल सकते हैं. जी, क्या आप चालें? ठीक है. बोलिए. अभी मैं आपको सुन रहा हूँ. थोड़ी देर बाद में फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन करूँगा प्लीज. अच्छा नहीं, ठीक है. अब खत्म कर रहे हैं हम लोग. या लक्ष्य, you can go with the question. जी सर, मेरा एक सनातन को लेके क्वेश्चन था. मैं पूछ रहा था कि भारत जो है वो अपने सनातन कैलिबर का, सनातन पोटेंशियल का फुल यूज कब करेगा. जैसे मैं थोड़ा रिसर्च करा गुरुकुल पे, इंडियन को रामदेव का ले लीजिए या श्री श्री का ले लीजिए, सदगुरु का ले लीजिए, इनमें ना एक स्पेसिफिक स्टडी पढ़ाई जाती है. जैसे केरला में कुछ स्पेसिफिक पढ़ा दिया, जैसे कलरीपयट्टू पढ़ा दिया. हिमालयन स्टडीज अलग चलती हैं. पहाड़ों में कोई बाबा बैठा हुआ ऐसी जड़ी बूटी दे रहा है कि एक दिन में ठीक हो गया. ये सब भी तो कल्चर है ना सर, वो तो पढ़ाया जाए. बेटा पहली चीज सनातन को समझो. सनातन के कुल मूल उद्देश्य हैं जो हमें वेदों से मिलते हैं, रामायण और महाभारत से मिलते हैं. दूसरी बात यह है कि सनातन को एक धर्म है. सनातन एक रिलीजन नहीं है जहां पर किसी किताब को हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ा दे. सनातन एक लाइब्रेरी है. इसमें बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम रामायण पढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया में रामायण पढ़ते हैं तो रामायण का रूप अलग है. लेकिन जब हम तमिलनाडु में जाके कुंडुंग रामायण पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना के लिए जिस पुरोहित को बुलाया था वो पुरोहित रावण था. और रावण ने कहा कि बिना धन पत्नी के कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता है. तो रावण माता सीता को लेके साथ में आए थे, पूजा करी थी और वापस ले गए थे. ये कुंभन रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्थ इंडियन रामायण में ये नहीं लिखा हुआ है. तो सनातन एक लाइब्रेरी है. मूल उद्देश्य पढ़ो. मूल उद्देश्य संसार का भला है, लोगों को कर्म सिखाना है, भय मुक्त होना सिखाना है, कैरेक्टर डेवलपमेंट सिखाना है. अब उसमें कोई माता सीता को लेके आता है तो वो एक कैरेक्टर का रूप है, ठीक है. और अगर कोई नहीं लेके आता है तो वो दूसरे कैरेक्टर का रूप है. तो इसीलिए सनातन में दिक्कत ये है कि हर इंसान अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट करता है. मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में सनातन की बात करता हूँ, जब मैं रामायण महाभारत का पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो मैं इन चीजों में नहीं जाता. मैं मूल उद्देश्य जो है, जो फाउंडेशन है, उस पर बात करता हूँ. और जो फाउंडेशन आज आपको अपना जीवन निखारने में या गुजारने में आपको आसानी मिले, उस चीज को पढ़ो. तो हर चीज पढ़ो, कोई बुराई नहीं है. सनातन को पढ़ो, सनातन को पढ़ना चाहिए. लोग बोलते हैं कि इस्लाम को पढ़ना चाहिए. मैं तो पहले कहता हूँ कि अगर आपने सनातन को पढ़ लिया पहले तो इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो. लेकिन अगर आपने सनातन पढ़ा ही नहीं है, रामायण, गीता, महाभारत, चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, अगर आपने ये 4 चीजें नहीं पढ़ी हैं तो उससे पहले आपको कोई भी और मजहब का कुछ पढ़ने का आपको उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे. क्योंकि क्या होता है, देखो जैसे रामायण में महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, ठीक है, तो सब जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं दिया था. अर्जुन के साथ साथ उस उपदेश का एनडीटीवी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को भी हुआ था. लेकिन अर्जुन का दिमाग साफ था और खाली था, वो सीखना चाहता था. तो अर्जुन ने गीता उपदेश को समझा और सीखा. लेकिन धृतराष्ट्र जिसने उसी वक्त
लाइव टेलीकास्ट देखा था गीता उपदेश का, सुन रहे थे, वो समझना नहीं चाह रहे थे, वो कंपेयर करना चाह रहे थे। तो आप समझते हो कितना डिफरेंस आया है यहाँ पर। ये चीजें समझने की जरूरत है। गीता उपदेश बाद में समझो, पहले ये चीज समझने की। जब फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं उसके बाद कोई चीज अगर आप समझोगे तो वो ज्यादा प्रासंगिक होगी, ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज्यादा आपको समझ में आएगी। अरे ये तो थ्योरेटिकल मेंटली मैं बात कर रहा था विज्ञान की, सनातनी जो विज्ञान है, जैसे भाषा के भी कई फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में पढ़ाई तो वो अगर हम एक कर दें, पूरे भारत का लेके एक कर दें, आयुर्वेद हो या कुछ भी हो या जितने भी विज्ञान, जैसे आपने एक बिछिया वाली बात बताई थी, मुझे अभी तक याद है, वैसे वो सारी हम एजुकेशन विज्ञान जो है उसको एक करते तो वो क्या बन सकता है सर? वो तो वो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हिंदुओं की जो प्रॉब्लम है, सनातनियों की, कि हम पैसा खर्च करते हैं और इस्लाम को रिसर्च करने में, क्रिश्चियनिटी को रिसर्च करने में हम पैसा और समय अपना सनातन की रिसर्च करने में खर्च नहीं करते। और अगर मैं आज आपसे बोलूं कि गौरव प्रधान 1 करोड़ रुपए चाहता है कि अब वो सनातन में 10-12 स्कॉलर्स को रख के कुछ चीज बनाए, कुछ कंसाइज करे, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मुझे 1 चवन्नी का डोनेशन भी कोई नहीं देगा, और जो देगा वो ये बोलेगा ये पैसे लेके भाग गया। तो ये हमारे अंदर प्रॉब्लम है सनातन में। हम जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा टास्क है, छोटा टास्क नहीं है। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी आरिफ भाई। वो ये है कि यहाँ पे एक साहब है जे खान, मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं कराची से हूँ और मुझे तो माइक दिलवाइए, तो अगर हो सके तो इनको जरा माइक दे दीजिए। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से। अरे भाई सोर्स लगा रहे हैं गायत्री जी, सोर्स तो मान लो। अच्छा मैं जानता हूँ उनको, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जय खान आपके पास माइक है, आप क्या जय कहाँ है? जय खान नीचे है काफी। जय खान, जय खान जी, आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं माइक के लिए? दिख नहीं रहा है आप। ओके मैम, कैन आई आस्क द क्वेश्चन मैम? हेलो टू एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं कर्नल RDX से और गौरव जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान ने जो US की जो हमवीज वगैरह कैप्चर की थी वो ईरान के अंदर दिखे गए थे, तो ईरान का क्या कनेक्शन है रिलेटेड टू तालिबान? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद में देखिए खान साहब, क्या है, पहले तो आप सब पाकिस्तानियों को मेरा नमस्कार भारत की तरफ से। दूसरी बात, जो गरुड़ा बोल रहे थे भारत से, जय खान जुड़े हैं, इसके बाद वो पूछेंगे और फिर आप। अच्छा गरुड़ा जी, पहली चीज तो नमस्ते। दूसरी चीज, आपने ईरान की बात करी, हमवीज की बात करी, ये बात सही है। कुछ हमवीज वहां पर पहुंची हैं और ईरान उनको यूज कर रहा है, लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल, मिलिट्री नॉन ऑपरेशनल व्हीकल है। वो केवल एक हमवी है, वो मिलिट्री ऑपरेटेड नहीं है, उसके कोई कोड नहीं बन रहा है, उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं वो निकाल लिए गए हैं, वो निकाल के डिसेबल कर दिए गए थे। तो वो कोई थर्ड परसेप्शन नहीं है, वो केवल एक 4 पहिए की गाड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, हेलो एवरीवन। क्या मैं क्या बात कर सकता हूँ? यस, आपको माइक दिया गया है। तमाम लोगों को गुड इवनिंग। आरिफ भाई आदाब अर्ज़ है, और जनरेट टाउन से मैं भी कराची से, और आपके बहुत अच्छी तरह जानता हूँ आपको। और दूसरी बात ये कि पुरखे तो मेरे भी हिंदुस्तान से। कर्नल साहब से मेरा सिर्फ एक छोटा सवाल है कि हमेशा जंग का नतीजा जंग ही होता है। आपस में वार करना, लड़ाई करना, दुश्मनी करना, कभी ऐसा सोचा है कि मतलब है कि अगर आपस में थोड़ा सा भाईचारे को हम आपस में बढ़ा दें और बढ़ावा दे दें, और एक दूसरे के ऊपर ये जो फिर हम लोगों के जो जंगी बजट्स होते हैं, और जो जिन लोगों को हमने इंडिया को टारगेट बनाया हुआ है, इंडिया ने हमको टारगेट बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमारे जो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, तो ये खत्म हो जाए और ये एक्सपेंडिचर, तो कभी मतलब है कि ऐसा सोचा है कि कभी
आपस में दोस्ती का हाथ अच्छी तरीके से बढ़ा के मतलब है कि इन तमाम दुश्मनियों को, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। तो मेरी मतलब है कि एक विश है बड़ी, क्योंकि मेरे वालिद भी वही चाहते थे, और ये मैं मतलब है कि आप सब लोगों के सामने पेश रखना चाह रहा हूँ कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, ये नहीं कहिएगा कि वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान टेररिज्म है, फलाना है। आप उस दोस्ती का हाथ बड़े होने के नाते बढ़ाइए, और दूसरा ये कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, ताकि ये मतलब है कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो सुकून में आ सके, इंडिया की पब्लिक भी सुकून में आ सके, कि उनके जो फालतू बजट्स हैं जो, और लोग ऑफ कर सकें अपनी क्वेश्चन से कि अब ये टारगेट्स तो खत्म हो गए हैं आपके पास, जो आप लोगों ने क्रिएट किए थे टारगेट। तो अब उन टारगेट्स को खत्म होने के बाद अब आपके पास क्या जवाब रह गया है कि आप लोग इतने बड़े बड़े बजट्स लें और ये तमाम चीजें लें। ये सवाल मैं बहुत डर डर के पूछ तो रहा हूँ इस फॉर्म पे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि शायद आरिफ भाई जानते हैं पोजीशन मेरी ना। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा। दरअसल ये है कि ख्वाहिश तो ये पूरे साउथ एशिया की है कि अमन हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में आवाम की आवाज जैसे आपकी आवाज है वैसे उसको मौका दिया जाए। होता यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जब भी इंडिया के साथ दोस्ती करने की कोशिश की तो पाकिस्तान में जो एक्चुअल पावर बैरन्स हैं वो है आर्मी, और उन्होंने नवाज शरीफ समेत जब भी किसी ने आगे बढ़ के भारत से दोस्ती की कोशिश की तो उनको निकाल दिया गया हुकूमतों से, और उनके ऊपर गद्दारी और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा दिए गए। तो ज्यादा जिम्मेदारी मेरी नजर में पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान की आवाम सबसे पहले अपनी आर्मी को बैरक्स में भेजे, जो कि उनकी जगह है। जैसे भारत की आर्मी बैरक्स में होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के सब सर्वियंट होती है। पहले पाकिस्तान की आम आवाम को चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं, अपनी आर्मी को उसकी जगह पे भेजे, जो उसका काम है वो करवाएं उनसे। पाकिस्तान की आर्मी ये कर रही है कि पॉलिटिशियंस को गद्दार करार दे देती है और खुद टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट करती है। तो जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, पठान भी गद्दार है, बलोच भी गद्दार है, सिंधी भी गद्दार है, मुहाजिर भी गद्दार है। तो असल जिम्मेदारी पहले पाकिस्तान आवाम की है कि पहले वो अपनी आर्मी को औकात में लाए और उनको जगह दिखाए कि भाई साहब आपकी ड्यूटी ये है, सरहदों की हिफाजत करें, दैट्स इट। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको ऑर्डर देती है वो करें। आज जनरल फैज हमीद तालिबान के साथ मीटिंग करने के लिए क्यों गए हैं? क्यों शाह महमूद कुरैशी नहीं गया या शेख रशीद नहीं गया? हर चीज में जब आर्मी होती है आगे तो पहले ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सारी चीज आती है। मेरी नजर में पाकिस्तान आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उनकी बैरकों में भेजा जाए, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे लगाए जाए। 4 बार मार्शल लॉ लगा चुके हैं और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ आज भी चल रहा है। तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम की है कि जो चुपचाप अपनी आर्मी पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाती है उनकी है कि पहले जाके GHQ के सामने खड़े हो जाए कि भाई साहब बहुत हो गया, हम अमन चाहते हैं भारत के साथ, हमें भारत से दोस्ती करनी है, तुम लोग पहले अपनी बैरकों में जाके बैठो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आरिफ भाई मैं आपकी बात से मतलब है कि 100% जो है मुत्तफिक हूँ। यू आर राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन बात असल में ये है कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा नाइबर है और यही हमारे सामने टारगेट के तौर पे गुज़िश्ता 70 साल से पेश किया जा रहा है। तो अगर ये टारगेट अपना बड़ा होने के नाते जिसके पास जब वो बड़ा होता है तो वो ताकत रखता है, और ताकत रखता है तो वो इख्तियार भी रखता है। तो अगर वो इख्तियार रखता है, खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, खान साहब सुनिए मेरी बात, म्यूट कीजिए आप अपने आप। मैं बात मुकम्मल कर, हाँ करिए, मैं बात मुकम्मल करूँ, करिए। तो मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत अगर अपनी मतलब है कि इस खत्ते के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है, और ये कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे पुरखों का ताल्लुक वहीं से है, और आरिफ भाई की तरह जो है वो हम लोग भी बहुत ज्यादा मतलब है कि सर्वाइव किया है हम लोगों ने भी। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जो टारगेट्स उन लोगों ने बना रखे हैं जब वो खत्म हो जाएंगे, यानी मैं चूंकि उर्दू ज्यादा बोलता हूँ, तो वो जो वजह जवाब हैं तो वो जवाब खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये तो वे कर्नल से मेरा जो है भाई देखिए
जे भाई भारत से बड़ा होने का सबूत दिया था। नरेंद्र मोदी चल के लाहौर आए थे नवाज शरीफ के घर, क्या नतीजा निकला? नवाज शरीफ को गद्दार करार दे दिया, मोदी का एजेंट करार दे दिया। आज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, हम लोग ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अटल बिहारी वाजपेयी तो बढ़ाए थे, लेकिन फिर युद्ध हो गया, तब कारगिल कर दिया। और क्या हम लोग कोशिश करते हैं। अरे करंट सरकार नरेंद्र मोदी जी खुद चल के लाहौर गए थे नवाज शरीफ के घर पे। नतीजा यह निकला कि नवाज शरीफ को गद्दार करार दे के लंदन भिजवा दिया। आज वो वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर। तो भारत और अब क्या करे? चल के तो नरेंद्र मोदी जी गए थे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते बहन। मैं देखिए आरिफ भाई की बात को सेकंड करती हूँ, और जो भी वो खान साहब हैं उन्होंने जो भी सवाल पूछा है वो यकीनन आप लोग जो बैठे हैं वो पैनल वो उनका जवाब देंगे। मगर मैं एक एज पाकिस्तानी महाजिर हिंदुस्तानी होने के नाते आप लोगों से कहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान की ना दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी तो खैर कोई हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, कोई मुकाबला ही नहीं। ना हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कोई मवाजना मुकाबला हो ही नहीं सकता, बल्कि जो करता है तो मैं समझती हूँ हम हिंदुस्तान को छोटा करते हैं। पाकिस्तान की फौज की ये चालाकियां हैं बहुत ज्यादा कि वो अब जिस खुद अपनी बनाए हुए जाल में जो घिर चुका है, तो अब उससे निकलने के लिए उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अब वो उसको उसकी तमाम, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये एनालिसिस है जाती, कि अब वो अपनी ही बनाए हुए मॉन्स्टर से खुद खत्म होगा। वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि उसने इतनी गंदगी मचा दी है। पाकिस्तान की आवाम ना सुकून, पाकिस्तान सुकून में है, ना हिंदुस्तान सुकून में है, ना अफगानिस्तान सुकून में है। बांग्लादेश तो बहुत करम था उस पर कि वो अलग हो गया। ना बलूचिस्तान सुकून में है, कोई पूरा खत्ते के लिए नासूर है इस वक्त पाकिस्तान। ये मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है, मैं वहां पैदा हुई हूँ, नासूर है। अगर ये साहब जो भी साहब कह रहे थे कि हाथ बढ़ाना चाहिए, क्यों हाथ बढ़ाना चाहिए भाई? क्यों आग में हाथ डालना चाहिए? जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो अपने आप को स्ट्रांग करें, पढ़ाई में जिसमें वो आगे जा रहे हैं वो उनकी शान है। हाँ, एक जब ज़हबत है, जब तबाह बर्बाद हो जाएगा या खत्ता खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जिस बकौल आरिफ भाई ने कितनी उसमें इस पे बात कर चुके हैं, कितनी दफा वो हाईलाइट कर चुके हैं, पाकिस्तान की फौज सुधरने वाली नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए एक मार्केट प्लेस है, वो कमाई का जरिया है। मगर क्योंकि जाहिर बात है इंटर फेल, मैट्रिक फेल फौजी आता है, तो उसको क्या पता, ये हर किस, मैं यहाँ पे बैठे हैं फौजी, मुझे नहीं पता वहाँ का क्या स्टैंडर्ड है, मगर मैट्रिक इंटर हर किसी की स्पेशलिटी अलग होती है। हर फील्ड को चलाने वाले अलग तरीके से एक्सपीरियंस रखते हैं। हर काम आपकी स्पेशलिटी अलग है, यहाँ की स्पेशलिटी हर डिपार्टमेंट की अलग होती है। तो इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और खुद खत्म हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। शुक्रिया बहुत। मैडम गौरव प्रधान बोल रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में बोल दूं कि भारत की दुश्मनी पाकिस्तान की आवाम से नहीं है। भारत की दुश्मनी उन लोगों से है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जन्म 3 पॉइंट पे हुआ था: कश्मीर, रियासत मदीना और फौज। और जब आपका प्रायोरिटीज किसी नेशन की ये होती है ना कि आवाम, तो जहां आज पाकिस्तान खड़ा है कोई भी देश वहीं पर जाके खड़ा होता है। तीसरी बात, आपने भारतीय फौजों की क्वालिफिकेशन की बात करी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि भारत की फौज का एक सिपाही भी बहुत कड़े मापदंडों के साथ गुजर के सिपाही बनता है। अफसर की तो बात बहुत दूर की है। अफसर एक ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, या अगर 12th के बाद जाता है तो उसको सर्विसेज में ही ग्रेजुएशन करवाई जाती है। जो भी इस एरिया में वो करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, या फौजी बीए करना चाहे, बीएससी करना चाहे, वो करा जाता है और यूनिवर्सिटी से उन्हें प्रॉपर डिग्री मिलती है। भारत में फौज में भर्ती होने के लिए अगर एनडीए में
5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें से मुश्किल से 500,000 बच्चे ही सेलेक्ट किए जाते हैं। इतना टफ एग्जाम होता है। तो भारतीय फौज पे दुनिया में कोई उंगली ना उठाए वो जरूरी है। और दूसरी चीज, एक बात आपको मैं बता दूं जो मैं अक्सर बोलता हूं, भारतीय फौज नौकरी पाने का संसाधन नहीं है। भारतीय फौज कट्टर देश हित में काम करती है। जो भारतीय फौज के जवान अफसर जो भी हैं वो भारत को सर्व करने आते हैं, ना कि उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनके। इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री is not an employment opportunity for anyone if anybody has that idea. तो मेरा आप सभी पाकिस्तानी भाई बंधुओं को प्रणाम। मैं बस और जय श्री राम। मैं बस इतना कहूंगा, हम भी यही चाहते हैं शांति हो, लेकिन शांति तभी होती है जब दूसरा मजबूत होता है। और अब वो समय आ गया है कि अगर भारत पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो हम घर में घुस के उस आंख को फोड़ देंगे। अब वो दिन गए जब हम हाथ जोड़ के अमेरिका के पास पहुंचते थे कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जवानों के सिर काट दिए, कुछ करो। अब हम बताएंगे नहीं, अब हम घर में घुस के ठोकेंगे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की लीडरशिप को यही भाषा समझ में आती है और ये भाषा ही अब हम बोलेंगे। बाकी हमारा पाकिस्तान की अवाम से, भारत की कोई किसी भी जनता की पाकिस्तान की अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब भाई हैं। और जो पहले खान साहब बड़ा बोल रहे थे कि हमारे पुरखे भी भारत से हैं, तो खान साहब आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके पुरखे नहीं, पूरा पाकिस्तान का इतिहास ही भारत है। आप तो 75 साल पहले भारत थे ना, आप तो कहीं नहीं थे। हमने आपको जन्म दिया है, आपने हमें जन्म नहीं दिया है। तो आपके पुरखों की बात नहीं, पाकिस्तान के हर बच्चे के पुरखे भारतीय थे। और हर पुरखे के बच्चे जो पुरखे हैं 3-4 साल पहले जनरेशन, वो सब हिंदू थे, इस्लाम नहीं थे। ठीक है, तो मेरी सबको प्रणाम, हमारी पाकिस्तानी बहन को भी प्रणाम। गायत्री जी, माइक टू यू। Gaurav Manaji, we can close the session now. If you want to give your closing statements, then thanking our panelists, and then we can close. Yeah, thank you, Gayatri, and thanks to Gaurav ji, Colonel Rohit, and Arif bhai. Very very informative discussion. It has been 3 hours and 16 minutes because I'm recording, so I know. So you can see that there was a lot of interest in this, and obviously the discussion and the recording भेज दीजिएगा मुझे प्लीज, मेरे को अपलोड करनी है। हाँ जी, मेरे को मालूम है आप मेरे को पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले रिकॉर्ड करके रख लिया है जी। तो what I'm trying to say is that thank you for that. And then obviously the only request I have from everybody who's listening is that, look, we have to be together, as Colonel Rohit is saying. Even if it's 1 or 5 or 10 or 500, I think it does matter. So let's be together. And obviously reach ऐसे ही शुरू किया था हमने, एक अकेले बंदे ने या 2 बंदों ने या 3 बंदों ने, आज वो इतना बड़ा ग्रुप है कि हम लोग उसको सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। तो मेरा सबसे बस यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप अकेले मत फील करिए, हम सब इकट्ठे ही हैं। And I think अगर आपको कहीं पे लगता है कि you want to join and make it 1 + 1 11, then let's join our hands and obviously be part of the reach. And obviously there are a lot of platforms like this which should be together in anyways, isn't it? So my belief is not कि सिर्फ reach ही एक चीज़ है। I think हर चीज़ इकट्ठी जुड़ के इस ecosystem को बनाती है, and this is what I'm trying to do from long time. Whether it's Major Gaurav Arya, whether it's Vivek Agnihotri ji, whether it's Pushpendra ji, whether it's Gaurav Pradhan ji, Arif bhai, Rohit ji, or Kapil Mishra, Tajinder Bagga, everybody is with us and we are all together in this ecosystem, isn't it? So I think let's make it stronger and keep going, and Jai Hind, Vande Mataram. That's all I'll say to everybody. Thank you so much, and apologies for this audience who were not able to make it. I will definitely conduct another session with Gaurav Pradhan sir. And you can ask the question, sir, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे को DM किए जा रहे हैं। Thank you so much. We can end with a count of 5. Arif bhai, namaste, pranam मेरे तरफ से। Jai Hind to everyone. Thanks for hosting. We enjoy. Thank you, जी. Thank you. Bye.